Hello, everyone, and welcome to another episode of the show. This is a live stream that happens on Wednesdays and Saturdays at 8 p.m. Today is Saturday, 11th of March 2023. Welcome, everyone. Also, there is a thing that I don't want to talk about here, and I wrote a community tab post about it. So if you are here watching live on the YouTube channel, maybe you later on or now you can go to the community tab and read the latest post that I wrote there. It's a bit long, so it's okay if you read it later. It's nothing serious, just something I had to get off my chest about this channel, and I will, in due course of time, talk more about it. But until then, hello to everyone who's on the chat. Begha Kedia, thank you for the 100 rupees super chat. And Begha says, I just want to know about minority oppression in cities. Please enlighten me also. I want to share my stories of encountering minorities non generously. Encountering minorities non generously. I don't know what that means. But okay, if you want to come on screen and talk about it, feel free. The link is there's a link pinned to the top of the chat. If you click on it, you can come on screen. A few people are already here. Whenever people come, I talk. So before I proceed any further, let me put that ticker on. You can support this channel by clicking the join button below and becoming a member of the channel. You can also send super chats like Megha just did, or you can support the channel on Patreon at patreon.com/Vimoh. You can also go to my blog at vimoh.stck.me and click the support button there to make a one-time contribution. Now, having gotten all that out of the way, let us look at who all is here. Purvesh is here. Hello. Kailash is here. Not many people in the chat, but there are like a couple of people in the live stream already. Let me take on the first person, who is Ronnie Boy. Hi, Ronnie. Hey Mo, what's up? गुड गुड सब ठीक ठाक चल रहा है. बताओ क्या चल रहा है. Uh, I think when I was last time जब मैंने बात की थी आपसे हाँ. काफी बस क्रिएट कर दिया था मैंने किस बारे में? लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं किस बारे में बात की. मुझे याद नहीं रहता क्या लास्ट बात टाइम की थी जब हमने. हमने रिजर्वेशन और कास्टिज्म पे बात की थी जब अच्छा अच्छा अच्छा. a lot of people are assuming that I'm sad or something और हम्म. काफी लोग शायद चैट में कंफ्यूज भी हो रहे थे और के कहना क्या चाह रहा है वगैरह वगैरह. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ, नाउ आई रिमेम्बर. मैं तुमको बार बार पूछ रहा था, अरे भाई कहना क्या चाहते हो. हाँ मीम बन गया था मैं. वही क्योंकि चैट में भी कई लोग बोल रहे थे और कई लोग और बिल्कुल कुछ लोग चैट में बिल्कुल ऐसे घुस गए कि नहीं ये कास्टिस है ये रिजर्वेशन के खिलाफ है. अच्छा अच्छा. सो नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा तभी मैं कमेंट देखा. एनीवन हु इज, ये कमेंट तुमने ही दिया था ना, कौन सा वाला. लंबा वाला कमेंट उस वीडियो के नीचे. नहीं नहीं आई डिडंट कमेंट अच्छा, देन इट वाज समवन एल्स. अपेरेंटली ये दो तीन लोगों के साथ हो चुका है पिछले कुछ दिनों में. क्योंकि मैं वही लास्ट टाइम में बस क्लियरिफाई करना चाहता हूँ. अब मैं वो कॉन्वर्सेशन में वापस घुसूंगा नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा, लेकिन बस मैं एक हाँ चीज क्लियरिफाई करना चाहता हूँ. कई लोग बिल्कुल ऐसे घुस गए चैट में और बोल रहे थे कि नहीं कास्टिस या मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ. हाँ. मैं वही इतना बिल्डअप इसलिए दे रहा था पहले जो मैं बातें बता रहा था कि मैं कास्ट ये चीज कास्ट रिजर्वेशन को लेके नहीं है. ये मोर ओवर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कैसे जो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा लेफ्ट फील करते हैं तो कुछ सिस्टम बस उनके लिए होना चाहिए. बस मैं ये कह रहा था. तो अच्छा, लोग बस वही गॉट इट. कास्टिज्म और रिजर्व इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको रिजर्वेशन और कास्टिज्म से अलग रखो. गॉट इट गॉट इट. ठीक है. वैसे रिजर्वेशन और कास्टिज्म को अलग अलग रखना मुश्किल है क्योंकि दोनों इंट्रिंसिकली लिंक्ड है. मे बी दैट इज व्हाई अरे नहीं पीपल आर नहीं ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग टू यू. वही फिर आप हाँ. फिर कंफ्यूज हो गए. मैं ये बोल रहा हूँ कि कास्टिज्म और रिजर्वेशन को जो मैं पॉइंट रख रहा था उससे अलग रखो. अच्छा अच्छा, ओके, गॉट इट गॉट इट. ठीक है, चलो उसके अंदर फिर से नहीं घुसते हैं. कोई और पॉइंट है क्या? वही मैं आज एक एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा था आज कि हम्म. ये कई लोगों के लिए की पॉइंट हो सकता है. एथिस्ट के लिए कभी इस चैनल पे भी डिस्कस नहीं हुआ. जैसे कि हम रिलीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं हम्म. तो जैसे कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कुछ भी मतलब ऐसा होता है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के बंदे की तरफ से या कुछ भी क्राइम या कुछ भी ऐसा कोई बुरी चीज होती है हम्म. तो लाइक हमेशा जो भी ये चीज पे लेफ्ट जो लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों इस चीज पे अग्री करते हैं. वो लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं नहीं रिलीजन की कोई गलती नहीं है, वो बंदा ही उसकी सोच खराब है. हम्म. लेकिन लाइक मोर ओवर डिस्कसिंग हम ये चीज हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि
बंदे वही परफॉर्म करते जो उनके रिलीजन में उनको सिखाया गया। हाँ जैसे कि एक कलाम कलाम साहब का एक कोट है, अब्दुल कलाम सर का, कि रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स फॉर गुड पीपल एंड फाइटिंग, ऐसे कुछ था कि फाइट फॉर एंड वे ऑफ फाइटिंग फॉर बैड पीपल, ऐसे कुछ कोट था उनका, यार, अगर आपने उनके पढ़ा हो। उनको अब्दुल कलाम के इतने सारे कोट इंटरनेट पर उड़ रहे हैं कि मुझे पता भी नहीं कि कौन सा उन्होंने एक्चुअली कहा हाँ, तो था, कौन सा नहीं कहा बेसिकली था। उस कोट में ये बोल रहे थे कि रिलीजन एक वे है फ्रेंड्स बनाने का, लेकिन कुछ लोग उसमें लड़ने के लिए ढूंढ लेते, लेकिन नहीं नहीं, हमको मैं समझ अभी सकता पता हूँ। है। मैं तुम जो कह रहे हो वो समझ रहा हूँ, पर आई एम सेइंग आई एम नॉट श्योर इफ कलाम सेड इट। नहीं नहीं, ये कलाम साहब का कोट बहुत फेमस है, मैंने हर जगह देखा है। हाँ, वही इवन तो माई इसीलिए बोल टीचर। रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कोट हैं जो चारों तरफ हैं, बट जो उन्होंने कभी कहे नहीं है। इसलिए आई ओनली टेक कोटेशन सीरियसली व्हेन समवन कैन टेल मी व्हिच बुक इट इज़ फ्रॉम एंड व्हिच पेज इट इज़ फ्रॉम, सो आई कैन वेरीफाई इट। बट एनीवे, लाइक तुम्हारा मेरा, पॉइंट वैलिड है, लाइक जो तुम्हारा पॉइंट वैलिड है। पॉइंट में रखने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी मतलब लोग रिलीजन को वही, मतलब अब एथिस्ट ही कर पाते ये सारी चीजें तो, हुँ। बट अभी भी रिलीजन को हम, बंदे को क्रिटिसाइज करना छोड़ के हम अब रिलीजन को डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर दे तो ये शायद चीज वाइडली स्प्रेड हो जाए, हाँ, लोग हम तो अवेयर होना करते हैं। चालू हो हम जाए। या आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दैट। आई एम सेइंग कि लाइक लोगों का जो ये कॉमन पॉइंट होता है कि धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग जो धर्म को खराब कर देते हैं। मुझे लगता है कि धर्मों में बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि जब हम कुछ लोगों को दोषी करार देते हैं, तो हम उन लोगों को ठिकाने लगाने का कुछ करते हैं, जेल में डाल देंगे या पनिश कर देंगे, और अगर वो हो जाता है, तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहती है, वो सॉल्व नहीं होती। सो लाइक वही में, हमें धर्म के ऊपर ध्यान देना होगा। या योर पॉइंट इज़ वैलिड। वही या क्योंकि मतलब अभी हमको मतलब जो जैसे कहीं बंदा अगर वो कास्टिज्म करता है या कोई भी मतलब ऐसा, कोई भी ले लो, मुस्लिम बंदा है, हिंदू बंदा है, या कोई भी हुँ, अब जैसे कि कोई भी मुस्लिम बंदा अगर एक्सट्रीमिज्म करता है या किसी हुँ, औरतों पे लेके बोल रहे हो कि हुँ, उसको हुँ, ड्रेसिंग ड्रेसिंग से प्रॉब्लम है, बट वो बोलता है कि नहीं भैया हमारे में तो ऐसी ड्रेसिंग होती है, तो वो औरतों को हुँ, अपने हिसाब से ड्रेसिंग करे है। कोई भी बंदा हाँ, कास्टिज्म परफॉर्म करता है तो वही बोल के इसकी सोच खराब है, लेकिन हमको पता है कि कास्टिज्म का रूट कहाँ पे है, या हाँ। वुमेन का ऑपरेशन का रूट कहाँ पे है। वुमेन का तो ऑपरेशन का रूट पैट्रियार्की में है, जो कि हर धर्म में फैली हुई है। हाँ, इट्स लेकिन नॉट एन मतलब इस्लाम ऑफ कोर्स, स्पेसिफिक इश्यू। या लाइक हम, चलो उसको उसको हटा के हम मतलब ड्रेसिंग पे बात कर लेते, तो कि हाँ, जैसे मुस्लिम्स वो बोलते हैं कि हम नहीं, इनको तो बुरखा ही पहनना पड़ेगा, हम ऐसा ही करते हैं। उनको हाँ, रूट पता होना चाहिए, और हुँ, कास्टिज्म में भी सेम है कि उनको रूट पता होना चाहिए कि कैसा, क्यों ऑपरेशन होता है इनका, छोटी हुँ, क्लास वालों का। अगर हम अगर मोरोवर हम बंदों को उनको मतलब अगर क्रिटिसाइज करना छोड़ के अगर हम डायरेक्टली रिलीजन को जो एक्सेप्ट करके हम क्रिटिसाइज करना चालू करते, एथिस्ट के अलावा भी, वो लोग जो एथिस्ट नहीं है तो भी मतलब एक फायदा है एक तरीके से। हाँ, हाँ, आई एग्री। मैं तो कह कह चुका हूँ कई बार कि अगर मेरे सामने 2 चॉइसेस हैं, एक है कोई एथियस्ट जो कि कास्टिस्ट है, और दूसरा है कोई रिलिजियस पर्सन जो कि कास्टिस्ट नहीं है, इवन दो ही सब्सक्राइब्स टू सम इरेशनल बिलीफ्स। मैं रिलिजियस पर्सन को चूज़ करूँगा। द गोल इज़ टू क्रिएट एन इक्वल वर्ल्ड इन द फ्यूचर। उसमें उस क्वेस्ट में जो भी साथ दे, अगर वो रिलिजियस हो तो भी चलेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रिलिजन्स में रिफॉर्म करना चाहते हैं। मैं उनके साथ हूँ टोटली। पर ऑब्वियसली मैं उनके बिलीव्स को शेयर नहीं करता। पर अगर उनका बिलीफ, उनका उनका कमिटमेंट वही इक्वालिटी की तरफ है, तो आई एम डेफिनिटली ऑन देयर साइड। देखो ये जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना आज की तारीख में मुश्किल है, क्योंकि रीलेबलिंग हर चीज की हो चुकी है, जैसे कि अब हाँ। कास्ट को वर्ण वर्ण की तरह रीलेबल कर दे तो, और काफी हुँ। सारे मुस्लिम स्कॉलर्स भी बोलते हैं कि बुरखे की वजह ये है वगैरह, मतलब अलग अलग वजह हाँ, कोई बताते हैं वो रैशनलाइज़ेशंस, हाँ। वो रिलेबल कर देते हैं कुछ भी बकवास सा पॉइंट देके। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हुँ, एथीस्ट के अलावा वो लोग जो एथीस्ट नहीं, अगर जो रिलीजियस है वो भी अगर इस चीज को समझ कर, अगर रिलेबलिंग हुँ, छोड़कर एक्सेप्ट हुँ, कर लेके हाँ भाई प्रॉब्लम है, तो अगर वो एक वो पूरा पहलू अगर उस रिलीजन में से हट जाएगा तो प्रॉब्लम तो हुँ। वही सॉल्व हो जाएगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एथीस्ट बने बिना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल, बिल्कुल। बंदा रिलीजियस है। या मैं लाइक मैं इस चैनल का गोल कभी भी नहीं था कि मैं लोगों को एथियस्ट बनाऊँ। इस चैनल का गोल था कि एथिज़्म के बारे में अगर किसी को बात करनी है, गॉड के एक्जिस्टेंस के बारे में किसी को बात करनी है, तो हम बातें कर सकते हैं। मैं कभी भी इस खुशफ़हमी में नहीं था कि मैं किसी का माइंड चेंज कर सकता हूँ, ऑल्दो माइंड चेंज होते हैं कई बार, पर मैं माइंड चेंज करने के गोल से ये सब नहीं कर रहा, वैसे ही। ओके, बट दैट्स दैट्स इट। इट रोनी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। दैट वाज़ रोनी बॉय।
यार मैं ना कभी-कभी तुम्हारे पॉइंट्स को गलत समझ सकता हूँ। अगर ऐसा होता है तो मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो कमेंट्स में या ईमेल लिख के मुझे अलग से समझा दो। अगर नहीं समझाना चाहते तो दैट्स आल्सो ओके। बट समटाइम्स आई मे मिसइंटरप्रेट व्हाट पीपल आर सेइंग, सो इट्स ओके। डोंट लाइक गिव मी अ ब्रेक। I read the community tab post. My mind is not in the right place. The next person is Dynamo Coders. Hi Dynamo. हेलो विमो। Hello. हेलो। तो आप कब से बर्नट आउट हो रहे हो? कब से यार जल जल रहा हूँ मैं, बर्नआउट की अग्नि में जल रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट कम्स एंड गोज, समटाइम्स इट्स एक्सट्रीमली सीरियस, समटाइम्स इट्स जस्ट आज नहीं कर सकता। मतलब 10 में से मुझे लगता है कि मैं 5 नहीं कर सकता पर कर लेता हूँ, बिकॉज डिसिप्लिन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मैंने सोचा कि मैं अब्रप्टली ब्रेक लेने की जगह पहले से अनाउंस कर देता हूँ कि हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब ये लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू ना करे, और जब ऐसा होगा मैं तुमको बता दूंगा। पर ये लाइव स्ट्रीम डेफिनेटली एक दिन खत्म होने वाली है। हाँ, कहीं ये ना लगे कि एक दिन ओ ये कहाँ गया, लाइव स्ट्रीम हाँ, कहाँ है। हाँ, हाँ या मतलब मैं तो होऊँगा इंटरनेट पे, मैं यूट्यूब पे होऊँगा, मैं दूसरी चीज़ें कर रहा हूँगा। ये जो हफ्ते में 2 दिन बैठ के लोगों से बात करना, ये सस्टेनेबल नहीं लगता मुझे। बेसिकली बिकॉज ऑफ बोर्डम। No, not boredom, it's just I wrote in that post, right? I don't want to repeat what I wrote. It's या about, आई रेड इट। yeah, it's about how so many things, it does take an emotional toll. Live streaming does take an emotional toll. Like some time ago, I received a message from someone on Instagram saying, a few months ago, I sent you a message and you never responded. You write very well, but when a follower of yours needed you, you were not there. And I was like, I get 20, 30 messages every day. I can't read or respond to all of them. Sometimes, even if I read and I want to respond, I'm unable to because I have 10 other things to do at that time. So, in a way, people begin to have certain expectations from you, and it hurts to not be able to fulfill those expectations. And I don't think I even want to pretend as if I'm capable of fulfilling those expectations. So, पीपल जब किसी को स्टार्ट थेरेपी की थिंकिंग कि ज़रूरत यार होती ये है तो तो मैं बोलता हमारा हूँ, हाँ, जब किसी को थेरेपी की ज़रूरत है तो मैं बोलता हूँ भैया थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं दे देता हूँ। आई हैव इवन लाइक इंस्टाग्राम पे तो ऐसा भी हुआ है कि आई हैव रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम पीपल इन द मिडल ऑफ द नाइट about domestic abuse happening in their house, and I have reached out to people in social service circles, got tried to get people to their home, uh, even to the extent that I've asked if would you like the police to come to your house, and if that has been possible then I have even made inquiries about it. कोरोना के अच्छा टाइम विमो, पे somebody is जब written in the private chat chain someone, मैंने करा था इंस्टाग्राम पे मैसेज, नो रिप्लाई। किया, मैंने करा था इंस्टाग्राम पे मैसेज, नो रिप्लाई। अच्छा, सॉरी अबाउट दैट। आई कांट, इट्स जस्ट ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ मुझे और 20-25 चीज़ें करनी होती हैं। आई नो दैट सम पे मैं लोगों से कहता हूँ कि मुझसे उतनी उम्मीद मत रखो जितनी रख रहे हो। बट इट डज़ टेक अ टोल ऑन यू। बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स नॉट पॉसिबल टू लाइक आई कैन इट वुड बी वेरी ईज़ी फॉर मी टू लाइक हाँ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, ये देखो मेरी लंबी दाढ़ी, मैं बाबा बन जाता हूँ। बट आई डोंट वांट टू डू दैट। सो Yeah, but people will expect things from you, na? It doesn't या necessarily mean that you have to fulfill those expectations even if they're illogical, Yeah, but it feels because bad when I can't, and that causes हाँ part of the problem. चलो वो तो है, लेकिन फिर भी अब Anyway, तो वो सब छोड़ो, किस बारे में बात करनी थी बताओ? हाँ। मैं ये वही क्योंकि आपका पोस्ट पढ़ा तो उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल, तो मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कई बार, तो हुँ, मैंने कहा इसके बारे में बात करूंगा। जो मीडिया का जो मैनिपुलेशन चल रहा है, हुँ, मतलब आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है ये? मतलब कितना हाँ, ज्यादा बट इट्स बेटर देन मेरे 2 को नहीं इयर्स पता अगो। आप टीवी चैनल्स देखते हो न्यूज़ वाले या नहीं। टीवी चैनल नहीं देखता, पर टीवी चैनल के क्लिप्स तो यूट्यूब पे दिख ही जाते हैं और लोग तो भेजते ही रहते हाँ। हैं। मतलब पूरा दिन मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे आते हैं, ये देखो ये आदमी कितनी घटिया बात कर रहा है, ये देखो ये आदमी कितनी हेटफुल बातें कर रहा है। देयर वाज़ अ पॉइंट व्हेन आई हैड टू टेल पीपल हाय, आई अप्रिशिएट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू बट प्लीज़ गिव मी अ ट्रिगर वार्निंग, क्योंकि मैं दिन में 25 ऐसी चीज़ें नहीं देख सकता एक के बाद एक। Think about my mental condition also. What do you think they are thinking, these journalists who are doing these things? मतलब कि suddenly I mean कोई ज़मीर नहीं है क्या कि मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे except a few हुँ, हुँ, like रवीश जी, हुँ, मतलब
दे आर मतलब क्या उनको दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ? नहीं, देर पता नहीं। मर्सनरीज, देर मर्सनरीज, लाइक पैसे फेंको कुछ भी करेंगे, देर लाइक बेसिकली लाइक द एक्टर हु हैज़ अ बाथ इन अ टीवी स्टूडियो फॉर अ साबुन का एड, he doesn't know what the sabun is good for. He's get given a script, he gets some money, he reads it out and he acts out a role. But That's what these that people makes are. me question what's being what's the education in those journalistic schools, whatever they are, कि क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे मतलब? So these things happen despite the education, not because of it or because of the lack of it. And proof of it is in every other field also. You have really insensitive and cruel people coming out of really Ivy League education systems. It's got nothing to do with education, it's got to do with the person in themselves. I mean, it certainly is the case that, you know, when somebody like Arnav Goswami says what he says, जो कि Hmm. almost सारा crap ही होता है, Hmm. but मैं ये सोचता हूँ कि somebody he's certainly not dumb. He's had an education from Oxford. तो Hmm. मतलब फिर भी इतना झूठ बोलने में कई बार अटक जाएगा ना आदमी की, यार मैं कितना मतलब I कितना wonder झूठ about बोल that रहा हूँ. also, yeah. I sometimes wonder if he has a conscience. I wonder sometimes if he, before going to sleep at night, he and people like him think, Yeah. यार ये जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ. Like I should not have done that to that innocent person. I should not have caused national uproar about their innocent behavior on, you know, on my channel. But I don't know. Under normal circumstances, I would think every human being must have a conscience that tells them something like this, but these people have ruined lives. These people have destroyed lives by defaming people for no reason, accusing people of random completely made up shit for no reason except money. So Yeah. I don't know. I How don't they the completely as painted far as I'm concerned, JNU. Yeah. the jury is out on whether uh, all human beings are good human beings. Maybe they're not. Yeah, that's what it leads to. Yeah, Yeah. that makes me question how they are. But matlab, how they painted the JNU, that Hmm. university. I mean, क्या मतलब लोगों के दिमाग में आ गया है कि जेएनयू में अब तो मतलब हमारे फैमिली में एक लड़के का जेएनयू में एडमिशन हो रहा था उसके पीजी के लिए. फिर क्या हुआ? तो मतलब वहां पे बात चल रही है कि यार अब ये भी वैसे बन जाएगा. उसके बाप बोलने लगा यार वो कह रहा है कि मतलब हमने सुनी ये बात, मतलब मेरे हाँ, चाचा का लड़का है. हाँ, हाँ। हाँ, तो वो कह रहा है कि मतलब क्या, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को पता है कि उसकी सिचुएशन क्या होगी, बट हुँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही है चैट्स कि मतलब जेएनयू जाने के बारे में बात हो गई, ये कितनी बड़ी बात हो गई. कोई जो भी ताऊ वगैरह है वो सब बोल रहे हैं कि आप उसको थोड़ा रखो, यूट्यूब वगैरह से दूर रखो. एंड इवन माय फैमिली मेंबर्स आर कमेंटिंग. तो मतलब काफी अजीब है कि सबको लगने लगा है कि यार जेएनयू इज लाइक दिस ब्रेन वॉशिंग. दे डोंट नो कि दे आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड. तो yeah. या I इट्स think सो like सैड. my response would be like if this is happening in a family group, na, usually what happens is that people like I'm not trying to solve your family problem. I'm just saying कि नहीं नहीं. usually what happens in family groups is that person A has one opinion, person B shares that opinion, person C shares that opinion, person D shares that opinion, and they never encounter an opinion that is the other way. So या their bubble is completely, there are no holes in it. So family groups में लोगों का mind completely change नहीं कर सकते, but if you have an alternate opinion, if you have a sane opinion, for example in this case, just put it there. Don't fight with Yeah, but people, don't argue with I people. had a conversation with him. हाँ. Sorry, I had a conversation with him. तो उसने मेरे को कहा कि यार मतलब मैंने कहा था कि आप लिखो, हाँ आप लिख दो हम्म, कुछ, क्योंकि सब बहुत ज्यादा आपके उसके अगेंस्ट बोल रहे. कह रहे मैं तो ग्रुप से निकल गया. मैंने कहा हाँ ग्रुप से निकल गए, मैंने देखा नहीं. हम्म, तो कह रहे कि यार मैं क्या बोलूं उसमें. अभी इन लोगों को अब जैसे कोई फैमिली फंक्शन होगा, गांव वगैरह हम्म, जाएंगे, हम्म, तो वहां पे लोग मेरे को बोलने लगेंगे. अब मैं किसको समझाऊं, लोगों की सोच नहीं बदलती. मैंने कहा आपका पॉइंट भी ठीक है. हाँ. तो नहीं, मैं कह रहा हूँ आई कि वांट झगड़ो मत राइट ना. एक्शन. अगर अगर फैमिली में हो और लोगों के व्यूज इस टाइप के हैं तो झगड़ो मत, बोलो आप सब गलत हैं. जेएनयू एक रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी है. ये रहे सरकारी स्टेटिस्टिक्स जो बताते हैं कि जेएनयू अवार्ड विनिंग यूनिवर्सिटी है और उसने एक्सीलेंस वाले अवार्ड जीते हैं. जेएनयू से ना सिर्फ ये लोग निकले हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, पर ये लोग भी निकले हैं जिनको आप पसंद करते हैं.
जेएनयू में कोई खराबी नहीं है, टीवी चैनल वाले जेएनयू के बारे में झूठ बोलते हैं, बस इतना बोल के डाल दो और निकल जाओ ग्रुप से। लेट देम सी उनका दिस साइड जवाब ऑफ मेरे को थिंग्स पता है ऑल्सो। उसमें क्या होगा, कुछ लोग बच जाते हैं। उनका उनका जवाब मैटर नहीं करता। हाँ, What वो तो matter, नहीं you, करता। again, you're not trying to change their opinion. You're trying to simply expose them to another way of thinking. Maybe it will take root, maybe it will not take root. That's not up to you. But you should, I mean, people should try to expose their families to alternate viewpoints as politely as possible. And maybe it will help. That's the best we I can hope for. try, I try, I try, Mm-hmm. and that's I'm why I sure you get do. into a conflict every day. Yeah, yeah. So with That's why you with ask my about this every with my week. father, yeah, Okay. uh, So yeah, how does I get that go? into a Is he, does he take feedback from you kindly, or does he shut down? No, I mean, I don't know if I should, but he starts thinking that I am the rigid one. I'm not willing to change my हाँ. opinion. गलत इन्फ्लुएंस हो गया अब मतलब उनका यूजुअल जो है हम्म. पॉइंट वो हम्म. ये है कि आप विरोधी वालों को ही देखोगे तो वैसे ही ओपिनियन बनेंगे। हम्म. हाँ, तो मैंने कहा कि आप भी तो नहीं देख रहे, मतलब आप भी तो हम्म. नहीं देख रहे हो। एंड ही इज मतलब जेन्युइनली ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हम्म. मतलब he but his intelligence is going in the direction of making his illogical arguments sound logical, हम्म. which does not work with him, uh, with me, because I am his son. I know what he's trying to do, but समटाइम्स आई थिंक कि मतलब आई डोंट नो क्या कहते हैं वो, या क्या उनको पता भी है कि वो क्या कह रहे हैं, बट ही इज नॉट ट्राइंग टू एक्सपोज हिमसेल्फ टू जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई थी ना, तो मैंने कहा आप हम्म. देखो तो एक बार, हो सकता है कि कुछ हो, क्योंकि हम्म. मैंने देख ली थी। तो हम्म. अब नहीं देखनी, अब क्या है, वो बनाते हैं उस तरीके से, तो अब ठीक है, अब किसको कितना One of the एक्सप्लेन flaws करेंगे। with intelligent people is that because they have spent half their life knowing that they know better, क्या when circumstances arise when they don't know any better and they're being actively manipulated, it becomes very hard for them to accept that they're being manipulated. So they think that this manipulated thing that is happening to them, it's their choice. It's not something someone else is doing to them. This is why propaganda works. It appeals to the intelligence of the people. Like, you'll see the title of this videos, that exposed, सच्चाई पता चल गई. या So they always think that they have access to some information that is not publicly available to everyone, and you are that everyone because they know better than you. So facts are not going to change their mind. Appeals to compassion are not going to change their mind because, specifically because they're intelligent. A person who thinks that he's not intelligent will probably listen to you. Will think या that, द hey, maybe ईगो I एस्पेक्ट don't know. स्टेप्स। Huh? Ego steps in. Yeah, because I'm somebody is a son and somebody is a father, so there's always that distance. But when you Hmm. cross a certain age, then you, मतलब I as a son, or people generally as मतलब जो बेटे होते हैं, they try Hmm. to cross that barrier because they are no longer thinking कि मैं अब कुछ भी सुन लूंगा, Hmm. because they are being exposed to other information also from other Hmm. places. तो कई बार ये होता है कि वो वैसे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही जाता है, अब जो भी Hmm. खैर। तो वही है कि मतलब मैं ये देखता हूँ कि उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगता है मैंने बोला ना कि मतलब तोड़. इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा कि जो ब्रेन वॉशिंग हुई है? नहीं, लोग ढीले पड़ जाएंगे. Like, the only reason they continue to be brainwashed is because they're being exposed to that brainwashing material 24 hours a day. या And the spite and hatred that is being incited has to be maintained. This is not a natural state for people to be in. People can't constantly 24 hours stay angry, hateful and full of spite. इसको मेंटेन करना पड़ता है. इसको मेंटेन करने के लिए पूरी मशीन बनी हुई है. आईटी सेल्स जुड़े हुए हैं जो कि दिन भर फेक न्यूज़ कंटेंट बना बना के इनको पेलते रहते हैं. अरे हॉस्पिटल में बाप डॉक्टर सारे खराब. आज मुझे एक व्हाट्सएप भेजा मेरे परिवार के एक मेंबर ने कि एलोपैथी की वजह से लोग मर रहे हैं. सो मैंने थोड़ा रिसर्च करके एक रिस्पॉन्स में एक लिंक भेजा कि जो आदमी ये बोल रहा है वो एक नेचुरोपैथ है. वो मेडिसिन को इसलिए डिस कर रहा है क्योंकि उसका धंधा बंद होने वाला है. सो ये चीज़ें एक झटके में एंड द हटेंगी एंड नहीं. द एंड द आर्ग्यूमेंट्स जब दैट दे कम अप विद, जो आपने हम्म. बोला अभी अपने अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए, द हम्म. आर्ग्यूमेंट्स दैट पीपल कम अप विद, मतलब
कहाँ से कहाँ चला जाता। अब जैसे अदानी का जो भी हो रहा है अभी, अब वो अदानी के ऊपर ये किसका, अभी न्यू का एक चैनल है, उन्होंने एक वीडियो बनाया है, और बहुत सारे लोगों को लगेगा यार कंप्लीटली लॉजिकल बात है, कुछ तो गलत, अभी ये न्यू का है या किसी और का है, मेरे को ढंग से याद नहीं, तो मे बी, बट लोगों ने बनाए हैं कि मतलब कैसे वो लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो अब जिसको जो देखना है वो उसी हिसाब से देखे। देखो अडानी के केस में the important thing to remember is that this is not a matter in the court of public opinion. People can think of an industrialist as extremely bad and he'll still get rich. People can Yeah. think of an industrialist as extremely good and he might still lose business. इंडस्ट्रियलिस्ट का पब्लिक ओपिनियन कोर्ट में कोई स्टेक नहीं है. इट इज ओनली अबाउट व्हाट स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स थिंक, एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर a YouTube video No, made they by won't. a couple of influencers, right? So Even if अडानी के they're केस में saying जो हो रहा something है, different in front of media, they will still yeah, absolutely. That is a filter which is very hard to infiltrate. I just said infiltrate filter, but you get my point. अडानी के केस में ये सब मैटर ही नहीं करता. यूट्यूब पे जितने भजन गाने गा लो, उसका जो होना है वो होगा. आई वाज होपिंग कि मतलब कुछ चीज रिवील हो जाएगी इस सबसे सब कुछ बीजेपी तो के रिवील बारे हो में, चुका बट है. वो नहीं और क्या हुआ। रिवील होना? रिवील तो बहुत कुछ अरे होना था हम और लोगों हो को भी हुआ चुका ना, है. जिनको नहीं, मतलब एक्चुअली द थिंग इज रिवील सबके सामने हुआ है और सबको किसी ना किसी लेवल पे पता है. कुछ लोग इसको मानने से थोड़ा झिझक रहे हैं और वो ढीला पड़ जाएगा जब ये सस्टेन्ड मैकेनिज्म बंद हो जाएगा. अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि तमिलनाडु में बीजेपी के आईटी सेल के बहुत सारे लोग छोड़ के किसी और पार्टी में चले गए. ये इलेक्शन से पहले हमेशा होता है, पर ये हर इलेक्शन से पहले अगर होता रहा तो क्रैक बने रहेंगे. बट एनीवे डायनेमो, आई हैव टू मूव ऑन टू द हाँ, नेक्स्ट अगली बार कॉलर. करेंगे। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय. That was Dynamo. And the next caller, hold on, before I go to the next caller, Indian immigrant says, no matter how much I try to convince my family members, even when they concede to my logic, they will still end up watching the same news channel and voting for the same party. Yeah, that's because it's not about logic, it's about emotion. It's about a feeling of belonging that has been created. It takes them into that zone. They go into that kind of a news area and they feel comfortable. Indian immigrant says, I think the reason behind it is the habitual obedience that media is creating through propaganda towards this government by creating an infallible image. For many, Modi and Yogi are already becoming Oh yeah, absolutely. But believe it or not, it was worse 1 or 2 years ago. Things are actually better than they were 1 or 2 years ago. 1 or 2 years ago, it was complete and absolute and proud surrender of all intellectual and moral faculties. वो लोग बोलेंगे सबको मारो, मतलब हाँ सबको मारो. वो लोग बोलेंगे इन इन लोगों को मर जाना चाहिए, हाँ मर जाना चाहिए. इट वाज कंप्लीट एफिंग स्टूपिडिटी एंड क्रूअल्टी ऑल ओवर द प्लेस. अभी तो थोड़ा बहुत मतलब ये ऑपोजिशन पार्टीज ने जब से थोड़ा मस्कुलर रुख अपनाया है, चीज़ें इंप्रूव हुई हैं. बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, पर इंप्रूव हुई हैं. आई नो बिकॉज आई हैव बिन वॉचिंग दिस क्लोजली फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. आई बिन लाइक डीपली इन्वॉल्व इन दिस, एटलीस्ट इन द डिस्कोर्स पार्ट. सो या पिछले 2 सालों में चेंजेस आए हैं. From the titles they have on their show to the thumbnails on their YouTube, the kind of images they use, the way any information is presented, everything is biased against anyone other than BJP. True. Right. So the next caller is Nitish. Hi, Nitish. Hello. What's up? Hi, Vimoh. Hi. लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, आपको शायद याद होगा. मुझे याद नहीं है कब बात हुई थी. बेबी कैसे बॉर्न होते हैं. हाँ, बेबी कैसे बॉर्न होते हैं. बेबी कैसे बॉर्न होते हैं. ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर दिस लाइव स्ट्रीम. नहीं, जस्ट क्योंकि मेरे लिए वो एक्चुअली मेमोरी रिमेम्बर इसलिए है क्योंकि मे बी आपको शायद पता होगा कि पहले एक टीवी शो आता था दूरदर्शन पे, मे बी आई डोंट नो कोई जानता भी होगा कि नहीं, जासूस विजय करके. Maybe Jasoos Vijay. I think I remember this. Yeah. Did they have an agency called Vijay Anand, the detective agency? I don't know. उसका मुझे exactly याद नहीं, लेकिन वो actually AIDS awareness पे ज्यादा फोकस था उसका basically. अच्छा, okay. Okay.
सो बेसिकली, और उसमें जासूसी का थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा एंगल था, ऐसा नहीं था। अच्छा। तो उसमें एक सीन था बेसिकली। सो सीन वाज दैट के एक लेडी होती है, हम्म। और वो प्रेग्नेंट होती है, हम्म। और उसने शादी नहीं की होती है। और काफी सारे लोग उसको यानी टॉर्चर कर रहे होते हैं कि ये तूने क्या करवा दिया, कल मुही हम्म। ने ऐसा हम्म। ऐसा जो बोलते हैं हम्म। बेसिकली सोसाइटिकल हम्म। प्रेशर। और सब लोग उसको यानी धक्के मार रहे थे, वट एवर मिसबिहेविंग। सो मैं लगभग, आई डोंट नो मैं कितने साल का होगा, लेकिन 7 या फिर 7 7 ईयर। सो मुझे दिमाग ओके। में सबसे पहले यही हुआ कि बच्चे तो भगवान देते हैं, हम्म। तो इसमें ये लड़की की क्या गलती है। हम्म। और मैंने ये सवाल भी, हम देख ही रहे थे टीवी से, तो मैंने अपनी मम्मी से भी पूछ लिया। हम्म। तो मम्मी ने 2 मिनट तो मुझे भी देखा और पापा को भी देखा, और बोले तू बड़ा हो जाएगा तब पता चलेगा। अच्छा। तो तब से तो मुझे पहली बार नहीं लगा कि ये भगवान वाले लॉजिक में गड़बड़ तो बहुत सारी है। हाँ, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी है बेसिकली। हाँ, बहुत सारी है। फिर नेचुरली थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला मेरा पार्ट हमेशा ऑलवेज ज्यादा रहा साइंस पे, मुझे ऑलवेज पसंद है पहले से ही। सो ओके। आई डोंट फेल इनटू ट्रैप के गॉड वगैरह वगैरह। मेरे काफी सारे पापा भी मुझे ऐसे तो फोर्स नहीं करते, लेकिन बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मैं उनसे भी आर्ग्यूमेंट करता था कि हाँ, पहले ऐसे सब भगवान के पास तीर थे, तो अभी हमारे पास क्यों नहीं है, तो हमें हम्म। मिसाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो हम्म। हमने लॉस कैसे कर दिया, इतना सब कुछ था तो यूं। क्योंकि हम्म। हमारे पास अगर पावर है तो पावर जल्दी लॉस नहीं होती है। तो इतनी सारी हम्म। पावर थी तो गई क्या, अभी तो एक भी एविडेंस नहीं है, हमारे थोड़ा सा पास भी ऐसे तुमने ऐसे वेपन थे जो कि एक एक ब्लो में पूरे आर्मीज को खत्म कर देते थे। अंग्रेज आए और हमने कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग ना। हाँ, मुगल तो आए, हम वही लोग वही। कुछ भी नहीं कर पाए। सो कहानी है दैट्स द बस। पार्ट। मेरा नहीं, मुझे एक्चुअली टॉपिक पे बात करना था जो एक्चुअली प्रीवियसली बच्चा आके गया। और एक्चुअली हम्म। एज अ सवर्ण, हम बोल सकते हैं सो कॉल्ड सवर्ण, तुम्हारे पास थोड़े बेनिफिट होते हैं। तो हम्म। पूरी चीजें मेरे साथ ऑलरेडी हुई है। जब मैं कॉलेज में था तो एक ऐसे वाला नहीं, सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास का कोई बच्चा था, उसने सिर्फ हम्म। फर्स्ट ईयर किया और उसके 42% थे, मेरे अराउंड 61% थे। फिर भी उसको सीट मिल गई। मुझे बाद में बहुत स्ट्रगल करने के बाद रीसफलिंग वगैरह में हम्म। 2 महीने बाद मुझे सीट मिली। वो बंदे ओके। ने सिर्फ एक ईयर किया, और और उसने छोड़ दिया वो सारी चीजें, यानी कि बेसिकली उसने सीट का डिसएडवांटेज सब बोल सकते हैं। हम्म। तब मुझे भी बहुत चीजें ये गलत लगती थी, क्योंकि हम्म। आई थिंक मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैं रिजर्वेशन को काइंड ऑफ पर्क समझता था। आप समझ रहे हो हम्म। पर्क के? हम्म। लेट हम्म। से अगर सपोज के कोई नेताजी है या फिर कोई मिलिट्री मैन है, तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, या फिर हाँ, एडिशनल पर्क, जैसे कि अगर कोई नेता जा रहा है तो उसको रोड खाली करा, तो समझ गया समझ गया। बैक ऑफ द माइंड हमें ऐसा लगता है कि ये काइंड ऑफ पर्क है। लेकिन हम्म। रिजर्वेशन आई थिंक मेरे हिसाब से दो टाइप्स के होते हैं, काइंड ऑफ, मेरे हिसाब से। कि हम्म। एक है जो अगर आपके पास आपको कोई डिसएडवांटेजेस है, तो हम्म। उसके लिए भी रिजर्वेशन होते हैं। और आपने कुछ नोबल किया है या फिर आपका पोस्ट कुछ ऐसा है, तो आपको रिजर्वेशन मिलते हैं। हम्म। लेकिन एज अ ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा अपर कास्ट के लोगों को यही लगता है कि सिर्फ पर्क्स ही मिलते हैं, कि बेसिकली आप कुछ हो इसलिए आपको मिलता है। सो बंदा लेफ्ट आउट करता है कि मैंने भी तो सेम किया है, उसने भी तो सेम किया है, तो हाँ, फिर हमें क्यों डिसएडवांटेज है। क्योंकि उनको लेकिन सेम एक्चुअली लगता में, रहता है जबकि सेम हाँ, होता नहीं है। हाँ, बेसिकली जैसे एक बस का एग्जांपल लेते हैं। बस में एक्चुअली लेडीज सिर्फ रिजर्व होती है। हम्म। इसका रिजर्व रखने का रीजन भी यही है कि मैन को फिजिकल एडवांटेजेस है ओवर द वुमेन्स, फिजिकल। हम्म। ऐसा नहीं बोल सकता हर एक का अवसर, लेकिन मोरली ऐसा ही होता है। तो बस में उनकी सिर्फ रिजर्व की गई है, क्योंकि जो ऐसा पावर के हिसाब से वो दौड़ के चढ़ सकते हैं या वट एवर कर सकते हैं, तो वहां पे पहले एक डिसएडवांटेज है वुमेन्स के लिए, नॉट कंपेयरिंग। लेकिन हम्म। तो उसकी नहीं, वजह से मैं रिजर्वेशन दिया हुआ था। आई एम नॉट श्योर दिस इज अ गुड एनालॉजी, क्योंकि नहीं, मैं आपको नहीं, जस्ट अगर मैं इसमें। रिजर्वेशन का लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई करके देखूँ ना, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग हम्म, विथ यू, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट हम्म, समथिंग। अगर मैं रिजर्वेशन का लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई करके देखूँ, वी हैव रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बिकॉज हम्म, the people who the seats are reserved for have social uh, forces acting against them, right? यस यस। So तो हम लोग उनके लिए स्पेस बना के रखते हैं ताकि अगर उनके लिए स्पेस सोशल फोर्सेस ने हटा भी दी तो भी एक प्रीमेड से स्पेस खाली रहेगा। सो बसेस यस यस में वहाँ। लेडीज के लिए जो सीट रहती हैं वो उसका कारण
I don't know if it is physical weakness. सम I think it is डिसएडवांटेज ना because यहाँ पे. social. यस No, यस. I don't think. I'm only disagreeing with the physical disadvantage part, and नहीं I'm नहीं, saying मैं it is फिजिकल नहीं probably बता रहा, मैं because समथिंग डिसएडवांटेज, समथिंग social डिसएडवांटेज यहाँ yeah. पे. यस यस, यहाँ I'm वहाँ saying it is a यहाँ पे. social disadvantage. That's all. यस यस यस, यानी कि यहाँ पे भी उनको एक डिसएडवांटेज है जो बरसों से Hmm. एक्चुअली वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो एडअप होते आ रहा है. लेट्स से Hmm. कि भाई Hmm. पहले दो बच्चे थे तो एक बच्चे Hmm. ने, जस्ट एनालॉजी के तौर पर बता सकते हैं कि किसी, सपोज के पहला बंदा था उसके दो बच्चे थे, ठीक है. Hmm. अभी दोनों बच्चे, एक ने अच्छा, दोनों को बिजनेस करना था, अभी एक बिजनेस करेगा तो दूसरा साफ सफाई करेगा, ठीक है. Hmm. तो एक बंद पापा ने डिसाइड करेगा हम दोनों की एग्जाम लेके, एक के 10 Hmm. नंबर आ गए, एक के 9.5 आ गए, अभी कोई हायर कोर्ट जीत जाए तो दूसरे वाले को बोल दिया अभी तू साफ करेगा, अभी ये बंदा बिजनेस करेगा. अभी नेक्स्ट पीढ़ी में क्या होगा, तो नेक्स्ट पीढ़ी में जो बिजनेस कर रहा है वो चाहेगा मेरा बच्चा बिजनेस हो. तो ऑलरेडी वहां पे उसके पास एक अपर एडवांटेज है कि उसके पास एक्सपीरियंस है, और जो बंदा Hmm. साफ सफाई करे उसके पास ऑलरेडी एडवांटेज लॉस है. Hmm. इसमें Yeah. एडवांटेज ये फेयर हो सकता है कि कोई एक जो बिजनेस करने वाला बंदा था वो अपने बेटे को भी सेम ट्रीटमेंट दे, और जो साफ सफाई करने वाले उसको भी सेम ट्रीटमेंट दे, और बाद में एग्जाम ले, और फिर ये बताए कि इसमें से कौन ने बेटर परफॉर्म किया. तो आई थिंक देयर इज अ फेयर कंपैरिजन, लेकिन यहाँ पे ये चीज हो ही नहीं पाती है, Hmm. क्योंकि ऑलरेडी जो बैकलॉग हमने क्रिएट किया है बेसिकली, सो वो एडअप हो ही नहीं पाता है. हम ऐसा बोलते हैं कि रिजर्वेशन, यानी कि अ, मेरे घर में भी ये बहुत मेरी डिबेट होती रहती है. तो ये प्रॉब्लम ये समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली कि उनको रिजर्वेशन देना क्यों जरूरी है. Yeah. आई उसका डोंट नो. कारण है हमको उनका लिव्ड एक्सपीरियंस इतना देखने को नहीं मिलता. यस मैं तो डेफिनेटली. एक बार ये भी पॉइंट कर रहा था कि if you look at films, you'll find that many main characters are Malhotras, Mehrotras, and Sharmas and Guptas and all. It's all upper caste main characters. So सभी जगह. हमें पता भी नहीं कि उनका लाइफ स्टाइल किस प्रकार से अलग होता है, उनको किन चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ता है. मेरा ऐसा है कि मैं, यानी कि जो डेटास होता है डेटास पे हम ज्यादा रिलाई करते हैं बेसिकली. सो हम्म. एज ए प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मुझे डेटास में ज्यादा इंटरेस्ट भी रहता है. लेकिन हम्म. डेटास हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली बहुत पोलराइजेशन है इस केस के अंदर. लेट्स से जो 3% बेसिकली अपर कास्ट है, और हम्म. उनके पास एज अ प्रॉपर्टी इंडिया का 50% उनके पास है. तो यहाँ पे किसी को यहाँ पे डिसएडवांटेज दिख ही नहीं रहा. मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये सभी लेवल पे, ये मैं तो सिर्फ एक वन ऑफ द पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन ये सभी लेवल पे. हम्म. तो एक रिजर्वेशन के पर्पज से, वो भी एक सरकारी नौकरियों में और प्लस एजुकेशन पे, तो वहां पे ये चीज आई डोंट थिंक कि कहाँ से वैलिड होती है. Don't know. किस चीज़ में, मतलब आप कह रहे हैं कि क्योंकि सभी जगह पे हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो सवर्णा क्लास है, ठीक है, उनके पास सभी जगह पे, जैसे आप यानी कि अमीर आदमी गिन लो तो उनके पास सबसे ज्यादा यानी कि बिजनेसेस वगैरह वो ओन करते हैं, ठीक है. हम्म. इवन लैंड्स है तो लैंड्स भी वो ज्यादा ओन करते हैं, ठीक है. यानी कि मासिस, यानी कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है वो उसका मास ज्यादा है, यानी परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन हम्म. फिर भी 50% ज्यादा ओन सवर्ण करते हैं काफी सारी चीजों में. या गॉट दैट. तो ये हाँ, मैं पहली बार मैं पूरा समझ नहीं पाया था. हाँ, गॉट इट. हाँ, तो बेसिकली क्या है कि ये चीज भी देखनी जरूरी है ना, कि वो काफी सारी चीजें तो ऑलरेडी रिसोर्स तो उनके पास ऑलरेडी है, हम्म. और उसके बाद तो अभी ईडब्ल्यूएस भी आ गया, तो अभी तो मैं तो क्या बताएं. या कोई प्रॉब्लम गॉट नहीं इट. है. पर एक चीज ऐसा है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ईडब्ल्यूएस आने नितिश, के बाद आपका हम एटलीस्ट. आखिरी पॉइंट बताइए. हाँ, 3-4 लोग वेट कर रहे हैं. यस सर, आई एम फिनिशिंग. जस्ट हम्म. ईडब्ल्यूएस आने से एक फायदा आर्ग्यूमेंट में हो जाता है कि अभी तो तुम हाँ, कुछ नहीं बोल सकते ना, अभी तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल भी एक मिल है. जाता देने को. ठीक यही है. तो चाहिए था तुम्हें, ईडब्ल्यूएस मिल तो गया, और क्या चाहिए, चुपचाप बैठो कोने में. ठीक है, ठीक है. ओके विमो, हाँ, थैंक यू. थैंक यू नितिश. थैंक यू. बाय बाय. बाय. This was Nitish Gowde. The next is Shiroyasha. Hi Shiroyasha. हेलो हेलो. Hello. हाँ, तो अभी लास्ट कॉलर बात कर रहे थे जासूस विजय के बारे में. तो हाँ. या लाइक मे बी आई एम द सेकंड पर्सन इन दिस होल स्ट्रीम हु रिकॉग्नाइजेस दैट शो. Okay. तो ऐसा था कि What मतलब year ये किस चैनल पे आता था और कब आता था? Can you tell me? डीडी नेशनल, और आई थिंक सिर्फ संडे टू संडे आता था. और लेट मी जस्ट चेक कि कब किस आता था. आई साल थिंक में?
early 2000s, let me just check. Early 2000s. इसमें थे Early आदिल हुसैन, who 2000s. used to play the main character. आदिल हुसैन and Om Puri used to play the supporting character. Okay, then I'm confusing it for something else. I It's I remember 2002. a detective agency where there was at least one guy whose name was Vijay, but it was a kind of a comedy mystery. So this must be I something think different. हाँ, हाँ. I think that also वो भी DD नेशनल पे आता था, but हाँ मैंने भी देखा है हाँ. शायद वो, but उसका नाम कुछ और मु- था. उसका नाम कुछ और था, मुझे याद है वो, क्योंकि उसमें एक बहुत फनी सीन था जहाँ पे इनकी एजेंसी का नाम था विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी, लाइक दे वांटेड टू स्पेल Okay. आउट वादा, कि हमारा वादा है हम Oh, तुम्हारा केस सॉल्व करेंगे। okay. फिर पहले दिन उनके ऑफिस में एक पोस्टमैन आता था, बोलता था ए वड़ा की दुकान यही है। हाँ, तहकीकात. The name is तहकीकात. नो नो नो, नॉट तहकीकात, दिस वाज समथिंग एल्स। तहकीकात आई रिमेंबर, इट वाज इवन ओल्डर। इट हैड विजय आनंद, Okay. लिटरली विजय आनंद, द एक्टर प्लेइंग इट, बट दिस वाज हाँ, तो I think it's directed by विजय आनंद only. हाँ, ये वही है तहकीकात ही है. अच्छा। सो इसमें और दो वो दिखता डिटेक्टिव भी थे। बहुत पुराना पुराना इसमें सा था. डिटेक्टिव था विजय, उसका असिस्टेंट था आनंद, बट या करेक्ट. लेट अस फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट हाँ, जासूस विजय। हाँ, तो द थिंग इज मतलब बचपन में मेरा पूरा केबल काट दिया था घर वालों ने, तो अच्छा। पोकेमोन वगैरह की जगह मैं ये डीडी नेशनल वगैरह ही देखता था। तो अच्छा। जासूस विजय मैंने शुरू करा था एज अ मतलब सस्पेंस एंथुसियास्ट कि मतलब कुछ तो मिस्ट्री देखने मिलेगा, बट हम्म, शो के एंड में कैसे ना कैसे तो सारी बात एचआईवी एड्स पे जाती थी। अब मैं अच्छा। एज अ चाइल्ड मतलब आई वाज पता नहीं उस टाइम मैं कितने का रहूंगा, 5-6 साल हाँ। का, बस लाइक मतलब ये हर बात इसी पे ही आ जाती है। वो आज मुझे पता लगा कि मैंने जब गूगल करा तो इट्स वाज लाइक मतलब उसका पार्ट एजेंडा यही था टू एनकरेज पीपल टू नो मोर अबाउट, टू ब्रेक द टैबू अराउंड एचआईवी एड्स एंड ऑल। या तो इट्स अ मतलब इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि अगर वो अनाउंस करते हैं कि हम एक शो कर रहे हैं एचआईवी अवेयरनेस के बारे में, तो बहुत से लोग नहीं करेक्ट देखते, और करेक्ट डिटेक्टिव करके मतलब दिखाया तो देख लिया। अब स्पॉइलर अलर्ट इंटरेस्टिंग। उसमें, हाँ स्पॉइलर अलर्ट ये है कि उसमें जो ओमपुरी जो मेन कैरेक्टर थे इवेंचुअली ही आल्सो एंड्स अप डाइंग थ्रू एचआईवी एड्स। ओहो। तो मतलब दैट बिकम्स लाइक अ मेन प्लॉट लाइन टुवर्ड्स द एंड, मतलब शो अपना रेगुलर प्रोसीजरल पुलिस ड्रामा छोड़ के पूरा ही एचआईवी एड्स से बन जाता है। लाइक ठीक है ओके। मतलब मतलब एज अ आई चाइल्ड आई वंडर डिड हाउ नॉट। मच ऑफ दैट वाज इनिशियल प्लानिंग एंड हाउ मच ऑफ दैट वाज लाइक लेटर दे हाँ फिगर्ड ए एड्स के ऊपर हाँ करें क्या, हाँ करते हैं। हाँ। तो हाँ, तो द ओनली गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ दिस इज लाइक दीज थिंग्स आर टैबू, मतलब सेक्स एजुकेशन या। एंड ऑल एज चाइल्डहुड नहीं बताया जाता है। एंड डीडी नेशनल पे ये चीज थी कि मतलब सैनिटरी पैड्स को लेके कुछ ना कुछ उनका ना इस पे कुछ ना कुछ आता ही रहता था, हम्म। उनके एड्स ये सब। तो मतलब बचपन से मुझे काफी जल्दी सब चीजें पता लग गई बिकॉज आई वाज क्यूरियस कि मतलब ये दिखा क्या रहे हैं। मैंने हम्म। उस टाइम पे इंटरनेट तो होता नहीं था, अपना डिक्शनरी खोल के बैठे फिर कि क्या होता है कॉन्डम, क्या है ये सब चीजें, क्यों इन्होंने हम्म। गुब्बारा सा बना रखा है। तो मतलब दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि मतलब उस टाइम पे मुझे पता लग गया, पर देखते देखते लगता था कि अरे मम्मी ने देख ले कि मैं क्या देख रहा हूँ, लगता तो था कि कुछ गलत कर रहे हैं। तो दैट हम्म। होल थॉट प्रोसेस ना कि मतलब जो टैबू बनाया जाता है वो चीज था। तो मतलब डीडी नेशनल का चलो ये तो बोल सकते हो कि उन्होंने इसमें तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो किसी नहीं, भी टाइम पे दूरदर्शन कुछ वाज, भी लगा दो। सो हाँ लाइक आई थिंक हमारे टीवी का पतन तब शुरू हुआ जब हमने इसको मैसिवली डेमोक्रेटाइज कर दिया। हम्म क्योंकि एंड आई एम सॉरी इफ आई साउंड अ लिटिल बिट स्नोबिश हियर, आई थिंक एक कहानी में क्या होने जा रहा है ये रीडर्स के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, वो डिसाइड करना एक राइटर का काम है। तो दूरदर्शन हम्म में क्या होता था कि कहानी में क्या होने वाला है ये राइटर डायरेक्टर बैठ के डिसाइड करते थे, प्रोड्यूसर्स जो शो बनाते थे, राइट। हाँ जी ये जो एकता कपूर का जोन आया, जहाँ पे सास बहू सीरियल्स हुए और उसके बाद सीरियल्स का स्तर घटता चला गया टू द पॉइंट दैट वी नाउ हैव अ सुपर हिट शो कॉल्ड तारक मेहता का उल्टा चश्मा, विच इज बेसिकली जस्ट स्टीरियोटाइप्स एंड रियली बैड ह्यूमर, बट इट्स सुपर हम्म हिट। सो हमने डेमोक्रेटाइज कर दिया, हमें लोगों से पूछा तुमको क्या देखना है बताओ, लोगों ने अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया, और हमने वो कचरा बना के उनको फीड करना शुरू किया। इट इज द स्टोरी टेलर्स जॉब टू डिसाइड व्हाट पीपल नीड। So something like Jasoos Vijay, an HIV based show, will not happen today, because हम्म if you ask people, nobody even knows that that's possible. The Yep. reader, the watcher is not smart enough to know what is good for them. It is the storyteller's job. And I know that I sound like a snob here, but that is my view on the matter. हाँ मतलब टू बी फेयर टू एकता कपूर ना, मतलब जो हम Hmm. पांच था आई नेवर न्यू एकता कपूर वाज द ब्रेन्स बिहाइंड दैट शो, Ah, यू नो। तो okay. मतलब वो डीडी नेशनल पे वो आया था, तो एक एंड मानो या ना मानो लाइक एकता कपूर हैज नेवर बीन दो सास बहू टाइप्स। द फैक्ट Hmm. दैट द वो शो लैंड कर गए ऑडियंस के साथ, तो शी वाज Hmm. लाइक ठीक है खाओ यही कचरा खाओ, बिकॉज एकता कपूर कीप्स ट्राइंग एवरीथिंग, मतलब वो ट्राई Yeah, करती है yeah. बट चलता नहीं है कुछ। तो शी आल्सो हैज नो अदर ऑप्शन ना, उसका भी तो बिजनेस No, है। I think Balaji Telefilms is doing nicely now. They figured हाँ out a recipe which is, हाँ smart, करेक्ट and करेक्ट। they're making it. हाँ बट कुडोज टू हर, मतलब वो ट्राई तो करती है एटलीस्ट, बट फिर चलता नहीं है तो उसके मतलब कहाँ से लाएगी वो। तो Hmm. ठीक है, दैट इज वन थिंग।
द सेकंड थिंग दैट आई हैड इज, एक और कुछ बात चल रही थी यहाँ पे कि मतलब जो अपर कास्ट लोग होते हैं फिर वो मतलब हम्म अपनी ही कहानियां सुनाते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, हम्म राइट? तो इसमें भी मेरे को एक चीज लगती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड, गॉड और गॉड्स, ज्यादातर लोग उसमें भी अपना पूरा मेल पैट्रियार्की तो चल रहा है, ओह एब्सोल्युटली राइट? हाँ है ना? आई थिंक हिंदुइज्म कुड बी वन, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन एक्सेप्शन, या जिसमें कि थोड़ा आदि शक्ति का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वेयर द या शिव एंड पार्वती मीट, तो मतलब कुछ तो आ हम्म जाता है, बट बाकी जगह तो ही, सुपीरियर, हिम, यही चलता है, राइट? तो मतलब इससे लोगों को हिंट नहीं मिलता है क्या कि मतलब देखो ना कहानी किसने लिखी है, किसके परस्पेक्टिव से हम्म सुनाई जा रही है, कि कोई इंसान ही होगा और कोई मेल ही या होगा, बिकॉज उस टाइम पे तो वुमेन को कहाँ ही कुछ, और वो चीज कहानी में आ जाती है, वुमेन आर मेनली यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स टू गेन पावर और मतलब सेटिस्फाई योर डिजायर्स, बस यही होता है या ज्यादातर। वेरी रेयरली डू वी सी पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स। तो उस हिसाब से एज अ फिक्शन मुझे लगता है महाभारत इज लाइक वेरी सुपीरियर फिक्शन, जो मतलब बाकी कल्चर आई से तो एग्री फार है। आई एग्री या हाँ, मतलब उसके प्लॉट पॉइंट्स तुम आज भी देख सकते हो कि मतलब यूज कर रहे हैं लोग, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, एंड पीपल आर नॉट रियली इन्वेंटिंग। तो मतलब उस मामले में तो लगता है कि आई डोंट नो as व्हाई डोंट fiction पीपल yeah टेक। yeah हाँ हाँ, I think we need to be like I've said this before obviously but we need to get more comfortable with seeing religious mythology as fiction. If we did genuinely think of it as fiction, a lot of problems will go away. नहीं दैट्स ट्रू। Hmm. हाँ, बट व्हाट आई मीन टू से इज मतलब पीपल को ऐसा सोचते नहीं है क्या कि मतलब अगर कहानियां किसी गॉड ने लिखी होती जो ओमनी प्रेजेंट है, तो Hmm. फिर वो सब में फिर मेल ही क्यों डोमिनेट कर रहे हैं वहां पे भी? Hmm. Yeah. आई डोंट नो व्हाई डू पीपल थिंक लाइक Like दैट। it's like we think of gods with arms and legs and arms and हाँ, faces and ट्रू eyes and nose, right? ट्रू। It's because we are human, right? If we were हाँ dogs, we would probably हाँ, imagine gods as dogs. या So it's not only the fact that human beings created these religions, it's also the fact that men among human beings created these religions. So they end up being एग्जैक्टली। patriarchal or क्या? हाँ, और उसमें अगर तुम एक फिगरलेस गॉड को भी देखो तो फिर उसमें भी जो प्रॉफिट होता है, दैट इज Hmm. मेल, दैट इज नॉट फीमेल वहां पे भी। Yeah, yeah, the prophet is male, no, but there have been religious जीसस इज मेल, प्रॉफिट इज मेल, तो मतलब prophet is male. रहता है। Also, the god has human qualities. यप Like यप, he's referred to as the father, and even if not father, then there is elements like compassion and anger and rage and all that. Those are एग्जैक्टली definitely एग्जैक्टली। human qualities. मतलब पूरा वो शेक्सपियर का प्ले चल रहा होता है उसके अंदर, तो Hmm. मतलब बंदे को लगता नहीं है कि मतलब गॉड अगर इतना ही है, बट देन दे पास इट ऑफ सेइंग ये तो लीला है, इससे तुमको Hmm. मॉरल निकालना है, डोंट टेक इट लिटरली। तो मतलब ठीक है, मतलब ऐसा तो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल Yeah. सकता है। But ठीक Shirya है, Asha, I have to move on to the next caller if that's okay with हाँ, you. ओके ओके, हाँ चलेगा। Cool. Thank you. Bye bye. That was Shiroyasha. Before I move on to the next caller, which is Valkyrie, I want to take a look at Barnali. Thank you for this 80 rupees super sticker. And Barnali asks, was Aryan invasion true or it's just a theory? What's your take, Vimoh? Aryan invasion theory is a debunked theory. Nobody actually believes in it. So Aryan invasion theory has not been taken seriously by people for a long time now. पर आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर हिंदुत्व वाले, क्योंकि ये फटा हुआ ढोल उनको पीटना है ये साबित करने के लिए कि भारतीय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जबकि इवन हिस्टोरियंस डोंट टेक इट वेरी सीरियसली दीज डेज। इट वाज अ थियरी फॉर क्वाइट सम टाइम, बट इवेंचुअली पीपल केम डाउन टू समथिंग लाइक आर्यन इमिग्रेशन थियरी। Like it is probably a fact, I mean, to whatever extent that historical certainty is possible, that certain populations entered the Indian subcontinent from the northwest, and they settled in the valleys near they settled near the rivers, and a lot of cultural elements from theirs became part of Hinduism today. And it is also true that there were people in the Indian subcontinent before that. The counter to the Aryan invasion theory can be the Aryan immigration theory, because people did come from outside. The counter to it cannot be that nobody came from outside, we went and established life and culture everywhere else, because that is demonstrably false. There is plenty of documented evidence that establishes that ancient river valley civilizations arose independently in Mesopotamia and in other places, Egypt, etc. It is entirely possible that we may have had things like Indus Valley civilization, which were thriving at that time, and we had relations with those civilizations. The world was not completely disconnected.
बट टू से दैट किसी के पास कुछ नहीं था, इंडिया में सब कुछ था और इंडिया के लोग बाहर जाके सबको सब कुछ दिए हैं, ये बकवास है। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए कोई खास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, unless you're like really creative with your interpretation of the data that we find. Prasad has asked, Vimoh, did you read the report on untouchability trends in India? I have sent you a mail. Prasad, no, I still haven't read it. I know that you have sent a mail. I have seen it. I will read it, but I have not read it yet. Neeraj points out, Barnali, watch this discussion on the book, The Origin of Early Indians, Tony Joseph, Dr. Pushkar Sohoni, Professor Keshavan Velutat, moderated by Gitanjali Surendra. Yeah, this should be a good discussion. I have at least partly read Tony Joseph's book, so I'm sure there would be some good views on this one. Facty says, what is your take on Aurangzeb? Ye kya sawal hai? What is my take on Aurangzeb? It's a long answer type question. Ask something specific. चेन सॉ मैन सेज, मैं क्यों में हूँ या नहीं? हाँ भैया, तुम क्यों में हो, वेट करो, वैल्करी है उसके बाद तुम हो। वैसे एक काम करता हूँ, आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू गाइस दैट माय पॉडकास्ट हैज माइग्रेटेड टू Spotify, like it's now hosted on Spotify. So what I wanted to show you is a feature using which a feature using which you can like send questions to the podcast anyway. So if you go to the Spotify page for the podcast, which is kind of long, just go to anchor.fm/Vimoh Live and it will take you to the full URL. The full URL is now really weird. It's like podcasters.spotify.com/pod/show/Vimoh Live. If you go to the podcast page now, you will see a message button there, right here on the main page. If you click on it, you will get a box, and in that box you will have the feature of sending a voice message to the podcast. So okay, यहाँ पे तो microphone access मैं नहीं दे रहा हूँ, but the point is this, that if you want to send audio messages for me to respond to, you can now do that. Just go to anchor.fm/Vimoh Live, and even when I'm not live, you can send an audio message, and whenever I'm recording an audio episode, I can include your message in it. I can answer the questions and all that. So that's something I wanted to show you. Uske alawa, let me just go to the live stream channel and remove the joining link because people keep joining, and there's a time limitation, so I don't want to continue taking people with till 9:30. Remove. Yeah, this is removed. Close. So let's take the next person. Valkyrie, you're up. How are you? I'm good. What's up? Hello. Hi, Vimoh. I'm not able to hear you. You are not able to hear me at all? You can't hear me? I'm not able to hear you. Maybe let me turn up the volume and see. Can you hear me now? Am I audible now? Give me 1 second. I think something happened. Give me 1 second. Let me check my audio also. Yeah, my audio is fine. Okay, so something happened. But anyways, yeah. So now you can hear me now? I took my yeah, I can hear you. I took my Okay, headphones cool. off. Huh. Go on. Yeah. So yeah. So maybe something happened with that. Yeah. So this regarding, so this Asian invasion and Asian migration, Aryan, like that. Yeah. So that Tony Joseph's book, Early Indians, that is there, and and now the thing is this: we have the DNA evidence, right? So that as more and more people do their DNA testing, so we are carrying the secret within us, and so now so that is a good book also, and so whatever gaps are not there, like we cannot say, okay, we are not able to figure out when people came at what time. We can also track the crops, like the rice crops. There are two kinds of rice, whether it came from China or it came from India, so there are two different like species of rice that they are tracking. So this thing will be called this, and
like it cannot be like, it has to be a mix of invasion and migration. It cannot be totally invasion and totally migration, and it cannot, and it is this So my is point is, a what is the evidence for the invasion? Because it, previously, yeah. what people thought of as evidence of invasion was certain, remains of the dead found in Indus Valley civilization. But later it was discovered that that is not sufficient evidence, and it seems more likely that immigration is the answer. So, is there any evidence for the invasion part? Invasion part, like if you see the Shuks and the Huns and the tribes that have been invading, or like even like Alexander, Hmm. so you cannot say that there were no invasions. So maybe these bands of I'm tribes, not saying that there were. I'm not saying that there were no invasions. I'm saying was the uh, coming of the Aryans primarily invasion based. For that, there is no evidence, or rather, very little and very sketchy evidence. I mean, it's a place and people live here. I'm sure evidence invasions happened. I'm sure people came and attacked and looted, etc. But was it a significant enough uh, force in shaping shaping what India is today? Like, were there vast numbers of people who came, invaded, conquered, and became part of India? That is what I'm asking. Valkyrie, I can't hear you. You're not muted, but there is no audio from your end. I don't know what has happened, but Valkyrie, I'm disconnecting you. If you want, you can come back, and uh, I'll take you on. Let us move on to Chainsaw Man. Hi, Chainsaw Man. हेलो। Hello. हाँ, एक्चुअली मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं बहुत टाइम से क्यू में बैठा था। मुझे लगा Sorry स्टार्टिंग के about that. 10-15 मिनट में। नहीं, काफी नहीं, टाइम उसकी लगता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बोलो. अच्छा। नहीं, एक्चुअली मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, एंड मुझे पता नहीं है कि साउथ में या फिर उड़ीसा में क्या चेंसो मैन सीन है इस चीज़ का। थोड़ा जोर से बोलिए. हेलो। हाँ, लाइक कम सुनाई दे रहा है पर क्लियरली सुनाई दे रहा है. थोड़ा जोर से बोलिए. ओके, सो मैं नॉर्थ में रहता हूँ और मुझे साउथ के बारे में पता नहीं है, आइडिया नहीं है। हम्म, लाइक यहाँ पर एक गुरुजी का कॉन्सेप्ट है, राइट? हम्म, लाइक ही इज अ बार्ड गाय, एंड लोग उसकी प्रीचिंग करते हैं। कौन और से मैं किसी दिल्ली का स्पेसिफिक हूँ। गुरुजी की बात कर रहे हो या जनरली गुरुजीज की नहीं, बात कर उनका रहे हो? उनका नाम ही है, उनका नाम ही गुरुजी है। अच्छा, ओके. हाँ, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो इमेज आ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो मुझे कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं लगता, बट उनके जो लोग हैं, जो उनके प्रीच करते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही क्रिंजी से हो जाते हैं। लाइक वो हर चीज़ में कनेक्शन ढूँढने लग जाते हैं, एंड बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगती हैं, राइट? हम्म, सो मैंने इसके लिए ऊपर रेडिट पे भी एक पोस्ट डाला था। सो लोगों ने उनके बारे में कुछ बताया, लाइक उन्होंने कुछ क्राइम व्राइम करे थे, बट उसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं थे, और क्या कहते हैं, लाइक कोई भी इनफ एविडेंस नहीं उनके लिए, और उनकी कोई भी इमेज नहीं है मेरे पास, लाइक इंटरनेट पे कोई खास नहीं। हम्म. सो साउथ में भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है उनका? आई एम श्योर साउथ में गुरुजी वगैरह होते होंगे, बट मैं साउथ से नहीं हूँ, सो नहीं, मतलब उड़िया साइड। हाँ, आई एम श्योर गुरुजीज हैं यहाँ पे. बट ये एक पैन ओके। इंडियन फिनोमेनॉन है. मतलब कोई बाबा टाइप दाढ़ी बढ़ा के गिरवे वस्त्र पहन के सफ़ेद कपड़े पहन के या पगड़ी पहन के थोड़ा नाच लेता है, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें बोल देता है, 2-3 फिरंगी उसके आसपास होते हैं या नहीं होते हैं, लोग आंख बंद करके मान लेते हैं. बिकॉज वी हैव दिस कल्चर ऑफ रेवरेंस फॉर गुरुजीज. अ लॉट ऑफ पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड ट्राई टू टर्न दिस इनटू अ करियर. ओके। सो एंड आपने वो एक न्यूज़ सुनी है जो लाइक होली के दिन जो जापानीज लड़की के साथ हुआ है? हाँ, सुना है. ये हर होली में होता है एंड इट इज़ क्वाइट बैड. हाँ, सो लेकिन इस हर चीज़ के दिवाली लिए के सब बाद कुछ 2-3 खबरें करना। आती हैं, कहीं आग लग गई. हर होली के बाद खबर आती है, कहीं कुछ लोग मॉलेस्टेशन हुआ है. नहीं, पिछले साल भी नवंबर की साइड, आपको अगर याद हो तो, एक कोरियन लड़की के साथ सेम चीज़ हुई थी, बट हाँ, उस टाइम तो हाँ. वो बच गई थी, बट इस टाइम नहीं बच हुँ. पाई।
जापानीज। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। शर्म की बात है ये। हाँ, सो यही चीज मैंने अपनी मम्मी को बताई और मतलब वो भी ये सेम चीज कह रही, बट अब क्या कर सकते हैं हम। कर ये सकते हैं कि अब अपने घर में जो लड़के हैं उनको बोलो ये सब ना करें। और क्या है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, लड़कों को अच्छी अपब्रिंगिंग देना। और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ मतलब मतलब हमारी तो अच्छी अपब्रिंगिंग है, लेकिन अब कुछ एक लोग हैं जैसे कि जो वही हैं, वो जिन्होंने इस चीज करी है, अब उनकी अपब्रिंगिंग नहीं है, तो उनके लिए हम क्या ऐसे कदम उठा सकते नहीं, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली नहीं, कोई ये सब करता है तो उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। पर कई बार हम लोग ये समझते हैं हैं? कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी है, पर हम फिर भी इट्स नॉट ओनली अबाउट पीपल जो सोचते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा करना सही है। इट्स ऑल्सो अबाउट द पीपल हु से कि लड़कियों का घर से निकलना अच्छा नहीं है, या लड़कियों को पढ़ाई-वढ़ाई कराना अच्छा नहीं है, या लड़की ऐसे कपड़े पहनेगी तो उसके साथ तो ये होगा ही। ये सब, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट विक्टिम को ब्लेम करने वाली टेंडेंसी है, ये भी इसके पीछे है, और ये कई ऐसे लोगों में भी होती है जो कि एक्चुअली क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। ये क्रिमिनैलिटी को बढ़ावा देने वाले बिहेवियरल पैटर्न्स हाँ, होते हैं। हाँ, नहीं मतलब वही बात है ना, वो बेचारे तो सोच कर आई थी कि इंडिया सेफ प्लेस है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बट और एनीवे इसके हाँ, बोलिए, आपका जी, आखिरी पॉइंट बताइए। आपका आखिरी पॉइंट बताइए, नहीं टाइम बस थोड़ा कम हो रहा है। मैं बस, हाँ मैं बस ये बोल रहा था, जो आपने अभी सुबह 11 मिनट का एक अपडेट डाला था ना अपने पॉडकास्ट से रिलेटेड, हुँ, जिसमें वो 84 एपिसोड शायद गुम हो गए थे आपके, हाँ, तो वो मे भी आपके तो आप वहां से निकाल सकते हैं वो मेबी मेरे क्या आपका ऑडियो कम हो गया था। गूगल पॉडकास्ट पे हाँ, एपिसोड्स हैं मेरे अवेलेबल पास, है। ठीक है? एपिसोड्स हैं मेरे पास, गूगल पॉडकास्ट पे हैं और यूट्यूब पे तो हैं काफ़ी सारे, और मैं उनमें से कुछ को री-अपलोड करूँगा, पर मैं सारे के सारे 100 एपिसोड्स को री-अपलोड नहीं करना चाहता क्योंकि वो सीक्वेंस बिगाड़ देगा। ये सारे टॉप कई एपिसोड ऐसे थे जो कि उस टाइम पे हो रहे इवेंट्स के बारे में थे। तो 2 साल बाद उनको री-अपलोड करना कोई पॉइंट नहीं बनता। पर जो हाँ इंटरव्यू ये वाले भी बात है। एपिसोड्स थे, मैं उनको री-अपलोड करूँगा। आने वाले हफ्तों में करूँगा। ओके, ओके, कूल? चलो ठीक है, इतने था बस मैं, चलो, हाँ थैंक यू बढ़िया। चेनसो मैन। बाय-बाय। थैंक राइट, सो मेघा हैज सेंड अ 40 रुपी सुपर स्टिकर, सेज वो टॉक का लिंक गया। मैं टॉक का लिंक चैट में डाल रहा हूँ पर सिर्फ मेघा के लिए है, कोई और आएगा तो मैं हटा दूंगा, ठीक है? मेघा जॉइन वाया दिस लिंक, मैंने चैट में शेयर किया है, पिन नहीं किया है पर चैट में है। मेघा जॉइन करना है तो कर लो इसके ज़रिए। द नेक्स्ट पर्सन इज ओके, लेट मी टेस्ट इफ वैल्करी इज बैक। हाय वैल्करी। वैल्करी? नोप, वैल्करी इज नॉट हियर। I suppose Valkyrie is not coming back today. So let's remove Valkyrie and take on the last or second last person. Dynamo says अब तो click कर देगा, मन कर रहा है विवो। Be active, be happy. Hi, what's up? हेलो हेलो, हाउ आर यू? Hello. I'm good, but थोड़ा जोर से बोलो। हेलो, अभी आ रहा है आवाज़? हाँ, अभी आ रहा है, बताओ। हाँ, तो मेरे कुछ कल्चरल क्वेश्चंस थे। हम्म तो आपको प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में पता है? मतलब मैं हिस्टोरियन तो हूँ नहीं, पर मुझे नहीं पता है कि इट इज़ स्पेक्यूलेटेड दैट देयर यूज्ड टू बी अ प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज व्हिच वाज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस स्पोकन इन यूरोप एंड इंडिया राइट नाउ। हाँ, तो कुछ लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये कोई मतलब रियल लैंग्वेज नहीं थी, ओके। क्योंकि क्योंकि अगर हम ऐसे देखें उनकी मेथोडोलॉजी डिराइव करने की, कि ये लैंग्वेज हम्म से ये लैंग्वेज आई, पूरा लैंग्वेज ट्री, तो मतलब वो बहुत कन्वीनियंट सा मतलब लगता है। हम्म तो कुछ लोग कहते आई एम हैं कि श्योर लिंग्विस्ट्स का इसके ऊपर मल्टीपल ओपिनियंस होंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इट। आर यू स्टडीइंग लिंग्विस्टिक्स और समथिंग? no, I'm doing it like as a side project in ओके। psychology. इन साइकोलॉजी, लाइक इट्स अ प्रॉपर पार्ट ऑफ योर एजुकेशन और जस्ट Not समथिंग यू डू ऑन yeah, यूट्यूब ऑन द it's साइड? on the side, yeah, On the side? Okay, go on. yeah. If you tell me something, I have no way of verifying it, but go on.
Yeah, so there are like some definitive things about it. For example, like wherever the word tea traveled by land, they called it cha or some variation of that. Okay. So it originated from China basically. So in China it is called CHA cha or something like that, and then to India it became chai. Then in Hmm. Iran and other Middle Eastern countries it's called shai. Okay. But to whichever places it went through sea, for example Britain, Hmm. or from there to various parts of the world, it's called tea or some variation of that. Hmm. Even in France, for example. Okay. बी एक्टिव So बी हैप्पी आई थिंक ये टॉपिक ना कई लोगों के सिर के ऊपर से निकलने वाला है. तुमने इसके ऊपर थोड़ा इन डेप्थ स्टडी किया है शायद, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा क्लियरली, एंड आई एम श्योर ये ऑडियंस की भी समझ में नहीं आएगा. okay, I'll reiterate. So wherever this tea traveled through land, like व्हाट डू यू tea मीन टी originate ट्रैवल्ड? यू tea द प्रैक्टिस ऑफ ड्रिंकिंग टी? exactly. ओके. So the practice carried the word also with it. So Hmm. wherever it originated in China. Hmm. So from China it went to India and it went to Iran, Iraq. What was the Chinese word for tea? CHA, cha. Cha? Okay. Yeah. And from there it went to different parts of the world. Now British came in India and took the tea, the practice of tea drinking and the word also with them. And then they went back to their own country. They spread it to other European countries like France, Italy, things like that. So there they are called tea, or for example in French it is called té, te, Okay. things like that. And then they also went to American and South American countries. So there also it's called some variation of tea. So Okay. like there are some definitive things like this in linguistic, but this Proto-Indo-European thing is a bit debated. Okay. Okay. So The you're second, saying that what you yeah. just explained to me is not part of the Proto-Indo-European language theory? No, 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 no. Okay. So I'm you're saying talking about, language spread organically and it took shape depending on yeah, the way exactly, people exactly. pronounced words. Yeah, And there is no one source from which all these yeah. languages came. Like Okay. how Got we it. can say that Eurasian continent was one big continent called Hmm. Gondwana. We have like Hmm. evidence for that because Hmm. we can find dinosaur Yeah. species. Yeah. Yeah, Yeah. so Yeah. we for that we have evidence, but for this Yeah. PIE we don't have. Yeah. Linguistic historical evidence tends to be resting on a lot of speculation usually. Yeah, exactly. But Second question. be active, be happy. I have two more people to get to. Yeah, Is it I okay if have we just talk about this one in detail question. some other time? I'm saying detail some other time because I am fascinated by it, but unfortunately it's already 9:10 and I Okay, don't have okay. time to I'll go ask into my it. second question. So did you watch the video by Soch about Which one? liberals? No, I haven't. It came back 4 days ago. I know, but I don't watch a Okay, lot of okay, search videos. okay. Is So there like, something I should be watching? Should I be watching it? yeah, so it raised some points like the problem with Indian liberals. What was the problem? So like he gives few points like liberals focus a lot on like faults of the government and not they don't look at the whole picture and stuff like that. Then he quoted some tweets by the opposition party and then few leftist people on like Twitter, and Hmm. then he gave some psychological theory like from some psychologist, and then he gave this 5 points like he gave one was care, second was fairness, third was in group loyalty, fourth Hmm. was authority respect, and Hmm. fifth was purity sanctity. Hmm. And then he said that uh, people like leftist people or liberals they focus only on like the first two aspects, that is care harm and reciprocity like fairness, whereas people like who are on the conservative side they Hmm. look at they give importance to everything like loyalty, Hmm. authority, like Hmm. stuff like that. And for a democracy to exist, like you need to like have all these aspects also, like you cannot ignore some parts of it. Okay. What do you think about it? Did you agree with him? I don't know what to feel about it. He also quoted some like things that the Modi government did, for example increase in toilets, increase in sanitation and Yeah. Okay. LPG. So this sounds like one of those
Like it sounds like a very souped up version of the thing that I have heard so many times in the last 2 years, which is कुछ अच्छा नहीं बोल सकते. That's what this sounds like. It sounds like I haven't seen the video. I don't want to comment on it, Yeah. but it doesn't sound like a very intelligent argument because it does not seem to take into account that uh, if conservatives are said to be valuing more good things, then where is the conversation about all the bad things that conservatives are talking about? Maybe he did mention it. Maybe you're just giving me a summary. I'll Yeah. try to watch that video. If I do, I'll talk more about it. But the point I want to make is that if a bus is going on a road and the bus is doing just fine, then it's very hard for people to say that there's something wrong with the bus. Yeah. बट इफ द बस का एक टायर फट जाता है या बस इतना रैशली ड्राइव हो रहा है कि एक पैसेंजर खिड़की के से निकल के उड़ के किसी कुएं में जाके गिरा, then obviously people will say that something is wrong. When Yeah. people say that something is wrong with a system, they're pointing it out not because they enjoy, not because they're like, ha ha ha, the system is destroyed. They're doing it because the system is not working the way it should. Okay. To So say that people should there's this always say point that good he things raised. about the government. Yeah. Go on. Just okay. So there's this point he raised about the CAA protests, that in some protests, like people were chanting Muslim slogans, La ilaha and something like that. And then Shashi Tharoor pointed it out that you should not do, like you should not make it a religious rally. Instead, you should like focus on the thing that you are doing. And then many liberals attacked him for that and stuff. I don't Did he say anything about the chants of Jai Shri Ram that people were making while they were waving guns at the people who were gathered at the anti-CA protests? No, he didn't. Yeah, that's my point. It's very easy to form arguments in support of those who are in power based on, as I said, souped up versions of "कुछ अच्छा नहीं बोल सकते." But if That's if why I was he avoiding and that video because yeah. I thought it might be I like, listen. okay, My point is not that liberals are perfect, right? I myself have made videos about this on this podcast. Okay, now that episode won't be accessible, but if you go to my main channel and you search for Indian liberals, you'll find a bunch of videos where I have talked about the problems with Indian liberals. And my problem has been that they don't engage in many meaningful ways with the issues of this country. It's all very sugar coated, surface level tokenism. But this shit sounds really stupid, especially coming from that channel. I think something I has think you should happened to watch that it. channel and I I think you don't want to should watch speculate it about it. because I'll try, but you'll forgive me if I don't because it does not seem like it's going to be very rewarding. I'll try. okay. But thank you. Be active, be happy. I'll have to move on to the next caller. Okay. Is Thank you. that okay? Bye. Yeah. Bye. Right. So that was be active, be happy. Before I move forward, Meta Galaxy, thank you for the 100 rupee super sticker. Much appreciated, sir, or person, or I don't know what your gender is. Shashank says, tea cha means chai banao in Chinese. Brits only took tea only. Okay. I don't know. It's fascinating. Linguistics. Linguistics is one of those subjects which is fascinating, but uh, I'm too lazy to go into it. Right. So the next caller, let me check if. Right, let's take Megha first. Hi, Megha. Megha, you're on. Hi. Hello. Yes, What's I up? was on mute. Yeah, good. How have you been? I've been okay. Oh, nice. I wanted to ask, like, if you could, like, I do not follow many of the channels which talk about this minority persecution. So, if Hmm. you could tell me few of the things which goes on in cities in and around minorities. One of those things that you have mentioned, which I heard recently, was about not getting a proper house to live in. If Hmm. somebody's surname suggests that they are from a minority section of the society. Hmm. So, likewise, are there other things which we could always help in? Like, we can always chime in. So, Oh, you want to a few help? things would help. Okay. Just Aryan. knowing things would help because Yeah, I being get in it. a I get city, it. I think a better solution for you would be to talk to members of minority religions and persecuted castes and find out what their problems are, because I can give you a surface level introduction to the subject. Like, obviously, one thing that I mentioned was that uh, increasingly in our media landscape we are having to
deal with increased anti-Muslim sentiment, and TV anchors are encouraging it. And a lot of times you will find that Muslim businesses are being boycotted by viewers of these channels under the impression that they are doing some nationalistic patriotic duty by causing suffering to their own countrymen. So that's one thing. I think if you I want to know. help with that, if you want to help with that, you can probably help spread awareness about it. And you can, if you find someone not getting business because of their religious identity, maybe you can go and help them. Like there is the number of things you can do as an individual are actually quite limited. This has to be systemic, which is why the primary thing is to raise awareness about this and to stand in support of the people who are being discriminated against. Yes, that's true. And we cannot do much about it. Although, even if I am being empathetic towards it, it might help from my bit. So that's why I was asking, like, such kind of scenarios, if you could provide, maybe you can create a separate video of just giving up pointers, and which I would watch and would know that this is what is happening in cities. Hmm. Not specific to Muslims, they are OBCs, I guess. So they are also treated bad. Hmm. I thought that only SC/STs have these issues, No, everyone so faces I some would amount know of much. casteism and And suppression. the thing is, I just have had collision with like two SC/STs in my, not STs, SCs in my lifetime. Hmm. One was in while I was being in a school, and then there was a girl who was getting the reservations, Hmm. and his her family was well doing in terms of finances and getting good government jobs, and she was kind of proud of it, which also made like in that stage of life, of course I did not supported reservation. I didn't Hmm. knew about it at all. Hmm. Hmm. And Hmm. after on cherry of the top, on the top, that she used to be this much arrogant about being, but people do get arrogant when that being in this situation. But she Hmm. also made one good point, is that this the communities, like all the minorities, whoever are getting reservations, they aren't doing much about it. Like they aren't taking the fruit of those reservation. And see, it's been many years, it must be like 15 years or so. But Hmm. then since then I've been thinking that people should have awareness about things that they can work on. Even those minorities, if they have been given some kind of reservation, it's well and good, but until unless they work on it and they take the good chime out of it, it's not going to work. So I think if in your channel people who are from minority classes do follow you or watches any of your videos, you can always spread awareness of uh, getting into That's the what we league. do. That's what we do. That's what we try to do. We talk about these things and we hope that more people will listen and become aware of it. I think instead of me talking about issues being faced by minorities, it would be better if whenever we have a member of the minority as a guest, we can maybe, like, you realize the problem with this. The problem with this is that I don't want to invite someone from a minority community only to ask them in a condescending tone, so what are the problems your community is facing? Because then I will look like a dick and it will be just adding to the problems that I just mentioned, like Yes, tone it deaf would be a liberalism. Western way of Yeah, of yeah, calling yeah, yeah. someone Yeah. So about racism. I think what I Yeah. would like to recommend to you and to everyone else who's probably in the same frame of mind as you is that just talk to more people from communities that are not yours. If you are from a privileged community, talk to people from non-privileged communities. Ask them in what way you can help. If they ask you to not help, then don't help. Just spread awareness, because sometimes we also create problems for them by saying नहीं नहीं मैं help करना चाहता हूँ. We become so missionary in our zeal to make their lives easier that we actually end up making it harder. So True. talk to people who you want to help and they will tell you in what ways you can help and in what ways you should not help. Does that help?
Yes, so it's not about these are diversion in the topic that I want to tell. I want to create an awareness not to deal with the distinctions that we have in our society. I want them to power up themselves so that they can use those privileges that has been not privileges, reservation, whatever word that you can want to use for it. I Hmm. want to with them like not to fight with the people that we are Hmm. but just to get them to a place that they are no longer being scrutinated because of all the issues that are going on Yeah, against yeah, them. that's the goal, right? That's the long term goal. And as I said, you should talk to them about it. That is the best thing. Yes, so if you could actually talk about them for working hard rather than just having fighting all the time. I do not believe in fighting or helping or something like that. I I don't know do what you believe mean in by that. being I don't know what you वो mean by हाँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि कोई अगर कुछ बुरा कर रहा है तो उससे झगड़ा करने का है। मैं बिलीव करती हूँ कि अपने आप को इतना एम्पावर करो कि वो कुछ बुरा कर ना पाए, जबकि आपके पास वो संसाधन अभी मौजूद है। पता नहीं रिजर्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा, रहा तो Hmm. अच्छी बात है, बट देन उस नहीं, रिजर्वेशन का मेघा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको उनके साथ बात करनी चाहिए, बिकॉज़ हम लोग अपने यहाँ बैठ के लाइक आप सवर्ण हैं, मैं सवर्ण हूँ, हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे, डिसाइड करने उनको ये करना चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए। पर उनके लिव्ड एक्सपीरियंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सो कई बार अगर आप कहती हैं कि उनको लड़ना नहीं चाहिए, उनको अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए, उनकी लाइफ का रियल सच ये भी हो सकता है कि वो लोग बिना लड़े अपने आप को पावरफुल नहीं बना सकते। उन्हें कभी-कभी ज़ोर से बोलना पड़ता है और हमें सुनना चाहिए। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यू शुड टॉक टू देम अबाउट योर डिज़ायर टू हेल्प देम एंड आस्क देम हाउ यू कैन हेल्प बेटर। yeah, I just knew two of them in my entire lifetime. Yeah. So So no more people. No more people. Reach out to like first of all, follow a bunch of them on social media. Don't say anything. Just listen to the things that they're writing. And sometimes maybe you can speak with them after you become friends with them, and they can tell you if they need help or they can tell you how you can help. That is the best way, I think. yes, like overall, I just want to summarize myself. I Hmm. just want them to be working on their career and their life goals. Of course, they will have issues. That's why they have been given reservation. But who does like there will be not everybody, but I could also have had issues while growing up. I had been from a destitute family. So if Hmm. I keep on grinding about it, I am not going to be going anywhere. Like नहीं मेघा आई not. थिंक मेघा आई थिंक वैसा बोलना थोड़ा इनसेंसिटिव हो सकता है। अगर कोई सफ़र किया है और अगर आप उसको बोलते हैं कि हाँ, तो व्हाट यू सफर्ड, स्टॉप क्राइंग अबाउट इट एंड मैन अप एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट। ये काफ़ी इनसेंसिटिव होता है। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं चौथी बार रिपीट करूँगा कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रियली व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, डोंट टेल देम दैट दे शुड टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ बिकॉज़ इट्स वेरी ईज़ी फॉर अस टू से दैट। they face systemic discrimination on a number of levels, and it is not as simple as simply taking charge of their life, because there are forces even preventing them from taking charge of their life, and we don't know the first thing about those forces, right? Okay, because So talk to it's them. not from my words, it is from those two people whom I have met in my lifetime. Huh, So so those yeah, only girls obviously have their told opinion me also that matters, but talk to uh, more people about this in order to about the build a better communities. understanding. That's Hmm. why I thought that if it could help, like if people can work harder. But then those all things are correct. I'm not saying that Hmm. situations do not matter. They do. Hmm. Although, but because they told me so, I felt it like that. This is one of, and that only made me to like after a while not to be in against of reservations Hmm. because I understood a lot of issues that they go through in day to day of their lives. But apart from that, this is what they have told me years ago that if all of them, or at least few of them, start to understand that working is also fine. I'm not Hmm. saying that they shouldn't be crying about it, but if they work it out, then if they come up at certain position, it would be a little better for them. Hmm. That's all. Right. Like, So I want to move on to the next caller because I really don't have time. But my point ha remains, ha. right? You should talk to, you should follow more
SC/ST Bahujan activists on social media, listen to the kind of problems they face, and then build a better understanding about how you want to help them. Is that okay? हाँ हाँ Cool. बिल्कुल. Thank you, Megha. Thank you for joining. Much appreciated. Thank you. Yeah. Bye. So that was Megha, and let me just thank a few people here who have sent super chats. Uh, Kumar Gautam, thank you for the 100 rupee super sticker. Much appreciated. Arey Kumar Gautam, are you KG42 on Twitter from long ago? I seem to remember your face. And thank you, Prasad, for the 100 rupee super sticker. Prasad Pant has sent 100 rupees super sticker. Thank you, Prasad. Much appreciated. I will remind everyone before getting to the last caller, who is Valkyrie, and there is someone called Aryan Tiwari who has jumped in despite me removing them 2 times. So I guess I'll keep them. But abhi और कोई join मत करो क्योंकि मैं नहीं लूँगा. There is Valkyrie and then there is Aryan Tiwari. I will remind everyone that if you want to support the channel, you can click the join button and become a member, or you can send a super chat here. I'm an independent content creator, and your contributions help me pay bills and pay for software and buy books, etc. So, thanks in advance. ये private chat में कौन है? Yes, Valkyrie, will try one more time. I have time for you. Yes. Go on, Valkyrie. Yeah, sorry, Vimoh, we are having some issues, looks like. Okay. Yeah, so now is it better? It's better. Go on. Okay. Yeah, so the thing is, there is this gap from, I think, 1900 BC to 1300 BC that we are not sure about. And I think Tony Joseph mentions that he will write a book that will cover that. So Okay, that's good. invasion part of it will become like Valkyrie, your clearer. voice is going down again. Is going down again? Okay. Yeah. But it seems it seems like that we do have, at least like the North Indian, they do have Central Asian, small part of it. Yeah. In Hey, their I DNA. don't deny that. I don't deny that. I'm saying, where is the evidence that it happened because of an invasion instead of an immigration? Because the one is the timing of the decline of the Indus Valley, like ending is the 1900, and so So the decline of the Indus Valley, as far as we know, sorry to interrupt. But as far as we know, the decline of the Indus Valley civilization happened because of climate reasons and not because of a war. Yes, but yes. So, but there are also parts where there are some idols have been broken, like they've been slashed and all, So There were no idols in Indus Valley civilization. In Dholavira, I'll check No, upon I mean it. there are broken statues, Broken but idols. statues, When you say right? idols, I think it's about temples and stuff. No, not that. But yeah. So it seems. So there are parts where it could be because of internal civil unrest, or it could be because of wars. And so I'm saying ki you will need significant amounts of evidence to establish something like an invasion. A broken statue is not an evidence of an invasion. I'm not saying there were no fights. I'm not saying nobody dropped the statue. I'm not saying people did not come from outside. I'm saying invasion is something for which there needs to be significantly more evidence than there is now. Aryan invasion theory has not been taken seriously for quite some time. It was proposed by racists, and it was maintained for quite some time because of the academic influence of the people, the Europeans who proposed the idea. But these days, not many people take it seriously. The other troublesome part is the word Aryan itself, because it was not, the tribes are not one tribe; they are different tribes, right? So there are different waves of. A lot of things. So, I'm not denying the possibility. I'm simply saying there is no evidence for it. It's a lot of things are possible, but you only take seriously for that for which there is evidence, right? Yes. Yeah. Okay. So but that is not why I joined. Okay. Why did you join? Yeah. So my thing was about, I think Dynamo Coders was talking about the WhatsApp groups and all.
like family WhatsApp group. And so my thing is like to not leave the WhatsApp group, because somebody, you have to kind of confront this thing at a smaller, within your own family WhatsApp group. And one thing you can do is you can start sharing Vimoh's content and, and get me into trouble. yeah, I you can have a just say, bad reputation among my own friends, like people who I used to be friends with a long time ago when in school, because my videos have started going viral to a certain extent on WhatsApp. So I go visit, and then someone randomly looks at me in accusatory tones, and I realize, oh god, this guy's seen a couple of my reels. yeah, but See here, look, Dynamo yeah, Dynamo Coder says my father already hates Vimo. So yeah. what am I going to do? That No, there is but this, and then there is also K, who says Vimo should be more radical. He's being too polite and accommodating with such ridiculously privileged and insensitive statements. Uh, uh, Valkyrie, if you don't mind, I just want to address this a little bit. sure. K, I hope you realize that I'm also from a Savarna background. The anger that you think I should display does not belong to me. It belongs to Dalit Bahujan Adivasi people, and I don't want to appropriate that anger. I do feel pissed when people say some things, but I try to talk to people as level headedly as possible because I myself am a recipient of the caste privileges that they have. So my goal is to point them in the direction of the people they should listen to. And that is probably not going to happen if I am too angry. I do get angry about it sometimes. If you have been watching this live stream for a long time, I have been what you describe as radical. But my default approach is to encourage people to have conversations, and that is why I was not the way you expect me to be. Valkyrie, go on. Yeah, see, because the problem is this. If it was just like the older generation talking among themselves and, having these conversations and, and the same thing with faith, they are praying among themselves and all that is fine. But when they start passing this poison to the next generation, Yeah. is so, so that is why, like, like you have to be like the rude person. And what I find is you can just start the conversation. You give them a fair warning. You just say, now I'm going to disagree with you here, and then you continue with your argument. And so you kind of prep them for for what is coming, and just continue the conversation. And because if you don't, they'll start telling these stories to small children, their grandchildren. So so at this point, if as long as if and you're not able to like convert your parents, it is fine. But at least they should know that if they if they are going to say these things, there will be a response. So they kind of limit themselves in front of the children and grandchildren or whatever, right? And nephews. That's the problem. The shame has so gone away. Like one yeah of the so biggest problem. I mean, the biggest problem right now is not that people in earlier times did not have these views. The problem is that now they have become shameless because they're being encouraged to be shameless. People were always casteist and Islamophobic and a whole lot of things, right? But these days, people are proudly casteist and proudly anti-Muslim and proudly pro-violence. That is the problem. That pride is being maintained through a system of propaganda. yeah, and like for Adani, right? If you can simply ask, don't talk about Adani, talk about how your LIC stuff is doing. Yeah, yeah. Everybody has LIC, and so with they using LIC to bail out Adani, it's a fair question to ask, like, so are you going to, what are you going to do with the LIC policy that you have? Yep. So there are different ways of doing these conversations. And so like I'll come back again. I'll do Yeah, we are I'll actually be quite a bit over time. Actually, it's over time. 9:30. Yeah, the 1 only hour feedback, 35 minutes. So yeah. yeah, so just I'll just give you the feedback.
like on you had a poll, I think, on stuff, right? Should it be only an atheist channel or other thing? So for me, it is more like. So just to clarify to people, I had put up a poll on my main channel saying ki, hey guys, should I just publish atheism videos here or should I post other stuff also, like creative stuff and all? And I asked people to help me decide. It was almost 50-50. Half the people said, yeah, put other topics here also. And half the people said, no, don't put other topics here. So I still can't decide. That's what Valkyrie is talking about. Valkyrie, go on. Yeah, so my thing is, see, so if you're an atheist, like like me, so you and I, so the only thing we could argue is about, like I'm an anti-theist, and so we could have an argument about that. But really, so there is really nothing from me on your channel if you're talking about atheism. So if you have other content, you have other guests, and you know about technology related stuff, so that is what I gain out of this. Other thing is where Valkyrie, your voice is okay again. So that's where I gain out of it. If you have other content, and then I can use that content to bring other people into the atheistic conversation. Yeah. No, but so what is your position on the poll? Should I put other topics on that channel or should I not? Yes. I should? Maybe like 50%. Yeah. Put 50% of other stuff. Okay. And in that, then you have the, in that, when you have the mix of atheism in that. So people will have those conversations also. Actually, something fun, which I don't know if I should. I'll mention it. YouTube has a new feature which is coming soon. It's not here yet, where people will be able to, like on Netflix, suppose you're watching a movie, you can just go down, click a button, and change the language to Hindi, and the movie starts playing in Hindi. So that is coming to YouTube. So pretty soon, I will not need my Hindi channel anymore. I will be able to publish a video in English, and I'll create Hindi subtitles, and I'll not subtitles, Hindi dub, and add it to the video itself. So people watching the video can simply click a button and change the audio track to Hindi. So when this happened, I thought maybe I can just start doing live streams on that channel also, and I can put all my content on there. But I figured that the algorithm does not forgive topical variations very easily. So I probably can't. But let's see. Okay, Vimoh, like I won't take more of your time. I'll Thanks, come back. Valkyrie. Yeah, thank you. Thank you. Bye-bye. That was Valkyrie. And all in all, good fun episode, man. Like, I had fun, despite my misgivings earlier today. I'll remind everyone to go to my community tab on this channel and read my latest post there. It is about this channel. Nothing serious, but do read it. And if you want to support this channel, click the join button and become a member. If you're watching this video at a later point of time, then you can click the super thanks button and make a donation. I'm an independent content creator. Whatever you contribute helps me. You can also buy merch at kadakmerch.com/Vimoh live. You can also support this channel at patreon.com/Vimoh. There are some new perks in the tiers. There is a $2 tier. There used to be a $2 tier, $10 tier, and a $20 tier. Now there is also a $5 tier. So if you are someone who's already supporting on the $2 tier, you can upgrade to the $5 tier, and there is a perk there. You get a print of a piece of AI art I made if you support for 3 months on the $5 tier. So all that is there. Go to Patreon and check it out, patreon.com/Vimoh. In addition to that, thank you for joining. And the next time I see you, it will be Wednesday at 8 p.m. when we will talk about the usual stuff that we talk about. And until then, I will take your leave and hope that you all take care of yourselves. Bye-bye. Where is it? Bye.